Hello, everyone. Good evening to in India. Good evening to everyone. Good morning in Canada. Massive breaking news that has happened. 20 people watching. Fantastic. Like the stream. Massive news that Newcastle have officially submitted the bid to Benjamin Sesko to Leipzig. एंड आज अंशुमन के साथ बात करेंगे विद द यूनाइटेड रोड इज हियर ऑलरेडी आ रहे हैं वो ही इज जॉइनिंग इन 5 minutes. We'll also going to talk about what will be the next transfer strategy agar we do not go for Sesko. And Fabrizio also has reported that we might actually go for another midfielder option. So fantastic. आज बहुत बड़ा शो होने वाला है. So do stay tuned. Swam is here. Absolutely awesome. Thank you so much. एक बार अंशुमन को पिंग कर लेते हैं. Awesome. चलो बढ़िया. चलो ठीक है. Awesome. Anshuman is joining soon as well. Hello Ash bhai. Yes Dhruv, thank you so much for joining. Manas Solanki is here. Yes, thank you so much. Discord server जो link है, it's already pinned in the chat. I have opened up my FPL. FPL are only for Discord members. Prizes are up for grabs. आप लोग Discord join करो, and then you can participate in the FPL as well. Absolutely. Ram is here as well. Thank you so much. Director Mastantuano is here as well. Thank you so much. Hello. Meta L is here. Thank you so much. I think I've seen you for the first time in the chat. If not, then thank you so much for joining. I hope you have subscribed to the channel. Soon we'll be reaching 600 subscribers, guys. 1000 ka road is absolutely on. Insane. So Tracy is here as well. Hola. Yes. Priyansh is here. Yes, Priyansh. Absolutely. Thank you so much for joining. हम लोग करते हैं कुछ for sure. Aniket is also here. Yes, Sesko नहीं आया तो Ederson और Kamara में कोई एक से ले आओ. Yes, we'll discuss about it, Aniket. And you see, all the streams I've been talking about it. If let's say we do not submit any bid for Sesko, right? What should be our priority? Our chats भी लेंगे and then we'll take some Anshuman bhai's thoughts as well. That's why I've called him as well. काफी सारी बातें करेंगे because we need to do that. Yes, guys, join the Discord server. Absolutely join the Discord server. 80 million for Sesko is risky. Newcastle will do what Manchester United did with Lenny Oro with Real Madrid. I know. Definitely they want to hijack. They absolutely want to hijack the deal. So it's fair. And this is what transfer windows are all about, right? So without further ado, the main man is here. Anshuman bhai is here. Absolutely. कैसे हो भाई? बढ़िया Ash भाई, how are you? मैं बिल्कुल बढ़िया. I'm good as well, but also confused at the same time कि मैं रात को सो रहा था, ठीक है, सोने ही वाला था पहले ही कि बॉम्बा तो नहीं आया, बट एक ऐसी न्यूज आई कि थोड़ा सा ट्रांसफर प्लान्स को मतलब चेंज करके रख दिया उसने, राइट, विद द होल सेस्को सिचुएशन. उस पर बात करेंगे as well with you. And also Fabrizio की भी रिपोर्ट है कि यूनाइटेड might actually go for some midfielders as well. So दोनों टॉपिक्स पे आज बात करेंगे अंशुमन भाई. पर सबसे पहले बताओ, how's your feeling about the transfer window going right now? I'm very content right now. थोड़ा सा, I would have loved another player. 3 player मेरे को अभी तक चाहिए थे. I am still expecting 5 player हम लेके आएंगे. Right. But मुझे 3 बंदे चाहिए थे सीजन के शुरू होने से, मतलब प्री सीजन के शुरू होने से पहले. Right. So I am not fussing कि भाई हम एम्बुएमो और कुनिया ले आए हैं, because I wanted that third player as well. But I am content. And ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, because transfer window was going to be slow. Fans के expectations of course high होते हैं after a bad season कि हम जाएंगे transfer window में, सब कुछ इधर उधर कर देंगे. But fans also needs to understand कि 15 साल का कचरा we are trying to take care of. Exactly. So it's gonna take some time. So content for now, but whether it's gonna be a happy window or sad window, the next 2 weeks, in my opinion, is going to be very, very crucial. बहुत crucial है. Also considering the fact that obviously we have to accept that the transfer plans did not go as per मतलब जैसे plan के हिसाब से नहीं गया, right? And already preseason शुरू हो चुका है. We'll also take your thoughts on preseason as well. Obviously squad अभी तक integrate completely नहीं हुई. नई signings अभी तक जो हम करने वाले हैं, they have not integrated into squads hardly. लेकिन 2-3 मैचेस बाकी है. Fiorentina बाकी है, Atlanta बाकी है, and I think Everton बाकी है. I think Everton and Fiorentina games बाकी है.
ये 2 गेम बाकी है अभी तक, सो वी हैवंट हैड आवर फुल स्क्वाड येट एज वेल. थोड़ा चैट ले लेते हैं एंड देन विल डिस्कस डायरेक्टली ऑन द टॉपिक. आदित्य राज इज हियर. Hello, hello, hello. If not Sesko, then a midfielder and keep Rasmus. Yes, we'll talk about all options today. I think एक pivot shift हो रहा है in the transfer window. The deal depends on Sesko himself. Yes, that's also something that still is lurking around कि United might still hijack this deal तो देख सकते हैं. Who should be a realistic target for the midfield position? उस पे सारा बात करेंगे आज. I have pinned your comment and everyone, so सब चैट लेंगे आज. हेलो अंशु भैया. यस ही इज हियर. सेस्को स्टार्टेड फॉलोइंग यूनाइटेड इन इंस्टा. वो तो ट्रेसी कब से फॉलो कर रहा है अंशुमन भाई? वो तो पहले से ही कर रहा है इन माय ओपिनियन, राइट? वो अभी रीसेंट एक्टिविटी नहीं है ये. वो जब आर्सेनल से लिंक था उसने तभी से फॉलो करा था. वो आर्सेनल से लिंक हुआ, भाई ने यूनाइटेड फॉलो कर दिया. बोलता भाई मेरे को कुछ नहीं लेना देना आर्सेनल के साथ. ठीक है मेरे को मत जाने दो उधर. नहीं, डेफिनेटली इट्स अ विन-विन. इफ नो सेस्को देन वी शुड गो फॉर मिडफील्डर. यस, तो अभी बात छेड़ दी गई तो बात कर ही लेते हैं. चलो एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं. बार्सिलोना कैन सेल कासाडो फॉर 30 मिलियन. यूनाइटेड शुड बी ऑल ओवर दिस डील. वेरी गुड प्लेयर. क्या कहेंगे अंशुमन भाई इस पे? आई थिंक बार्सिलोना नहीं जाने देगी टू ला मासिया. जाने भी देगी तो भाई फिजिकलिटी का मेरे को हमेशा से बारसा प्लेयर्स के साथ एक लगा है. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आप 7-8 गेम्स 10 गेम्स ला लीगा इसमें खेल रहे हो, चैंपियंस लीग में. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हमने टेक्निकल प्लेयर्स की फटते देखी है. यहाँ पे ना तो प्रोटेक्शन मिलता है रेफरी से, और जिस तरीके का आप फुटबॉल खेलना चाहते हो तो सामने वाले आपको कोई प्रोटेक्शन उस तरीके से देगा नहीं. उनको पता है द वे यू आर ट्राइंग टू प्ले, इनको डिसरप्ट कैसे करना है, तो फाउल आफ्टर फाउल. सो नॉट एवरीबडी इज मेड अप फॉर प्रीमियर लीग. बट देन अगेन कासाडो मुझे नहीं लगता पहली बात तो कि 30 मिलियन पे अवेलेबल होगा. ठीक है, और होगा भी तो आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू बी ऑल ओवर दिस डील. हम जिस तरीके से अभी हम साइनिंग्स करने का ट्राई कर रहे हैं, कासाडो इज नॉट द प्रोफाइल वी आर लुकिंग फॉर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम बात करते हैं मिडफील्ड ऑप्शंस की, तो यार वो किसी को नहीं पता है. ठीक है, किसी को भी नहीं पता है कि वो क्या है. अगर आप रोमानो के भी ट्वीट्स देखो, right, so what he is talking about. okay ऑनस्टीन बॉम्बा आ गया, पहले ले लो जल्दी से ऑनस्टीन बॉम्बा आ गया. लोको ऑनस्टीन बॉम्बा. चलो देखते हैं. ऑनस्टीन, डेविड ऑनस्टीन किधर गया भाई? ऑनस्टीन, लेट्स गो. क्या है? ओके, अलेक्जेंडर इसाक. ओके, मैं शेयर करता हूँ. ठीक है, हाँ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. बट इस पे बात करेंगे, बट मैं वो अपना पॉइंट थोड़ा कंप्लीट कर दूं. हाँ आप कर लो. यस, कि ये मिडफील्ड में हम कौन सा प्रोफाइल देख रहे हैं, नहीं अभी रोमानो ऑनस्टीन तक को नहीं पता. So it's gonna be very very difficult to say कि हम क्या लेके आने वाले हैं. fair. सब अपने हिसाब से बात कर रहे हैं. मुझे एडरसन पसंद है, मैं चाहता हूँ एडरसन आए. बहुत लोग बलेबा बोल रहे हैं. बलेबा यहाँ पे उस तरीके से बलेबा के पास पैसे नहीं है. अब बलेबा के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, सॉरी. right. एनी सीडीएम 100 मिलियन 120 मिलियन देने का लॉजिक मुझे लगता ही नहीं है, चाहे वो कितना भी जनरेशनल टैलेंट हो. थर्ड रिस्पेक्ट. एंड हम जनरेशनल टैलेंट तो यार सेकू कोने को भी बोल के लाए थे, तो उसको तो पहले खेलते देख लो. वो तो आया भी नहीं रोल के लिए लेके आया है, वो तो अभी आया ही नहीं है ढंग से. ठीक है, उसका तो लोन वगैरह सब कैंसिल कर दिया है. अब उसको देखो किस तरीके से वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट हिम इन द टीम. सो वी विल सी हाउ दैट गोस. राइट. सो अपने बोल रहे ओनी बॉम्बा केम फॉर इसाक. ओनी बॉम्बा आया है. हाँ, तो मिस बाय 100 ऑफर. ओके, एक बार चलते हैं तुरंत ही. एक बार चलते हैं उस बॉम्बा पे. एंड आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. ठीक है, तो चलते हैं डेविड ऑनस्टीन के बॉम्बा पे. ठीक है, अपन करेंगे ये. सो ऑनस्टीन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑनस्टीन बोल रहे हैं कि अलेक्जेंडर, आप लोगों को स्क्रीन अगर दिख रही है तो मेरे को बताना सब कुछ सही है. आई थिंक यस. अलेक्जेंडर इसाक कमिंग बैक टू यूके एंड विल रिज्यूम ट्रेनिंग एट न्यूकासल. MUFC squad returning from Asia's pre-season tour missed by 25-year-old striker. Liverpool saw offer for Sweden. International rejected, but interest going on. भाई देखो, अगर जब तक बिड्स रिजेक्ट होते रहेंगे, प्लेयर को भी तो लगेगा कि अब मैं अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रहा हूँ. राइट, व्हाट्स योर होल थॉट अबाउट दिस होल सिचुएशन विद इसाक राइट नाउ? सी, इसमें इसाक और न्यूकासल दोनों की गलती है. ठीक है, दोनों की ही गलती है इन माय ओपिनियन. बिकॉज इसाक, पहली बात तो अगर आपको जाना था यार, तो आप जब इनिशियली शुरुआत हुआ विंडो का, आप तभी बोल देते. ठीक है, जब सारे स्ट्राइकर के मूवमेंट्स इधर उधर हो गए, देन यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आई हैव टू लीव. ट्रांसफर विंडो खुले तो काफी टाइम हो गया है ना. एग्जैक्टली. सो इस तरीके से. और दूसरी बात ये कि यार न्यूकासल बिना 2 स्ट्राइकर लिए जाने देगी ही नहीं.
And you know, Exactly. one thing that they are also trying to do is disrupt market for United as well. ठीक है, कि भाई अगर उस तरीके से मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो भाई आपको हमारे से सामना करना पड़ेगा, बिकॉज दे वर ऑलरेडी टियर्ड अपार्ट इन द मार्केट बाय लिवरपूल फॉर एकेटेके। वो सोच के गए एकेटेके मिल जाएगा हमारे को, 2 स्ट्राइकर हो जाएंगे, ईसाक गया भी, देन वी विल सी, तो एकेटेके उठा के ले गए लिवरपूल। अब सेस्को अभी कुछ बोल नहीं रहा, सेस्को मोस्ट कैन बेसिकली मूव टू यूनाइटेड बाय सेइंग कि भाई मेरे को यूनाइटेड जाना है, तो वहां पे भी एल लगते इनका दिख रहा है। बट हाँ, इफ इसाक स्टेज फॉर वन मोर सीजन, मुझे लगता है बार्सिलोना एंड मैड्रिड विल बी इन द मिक्स। तो मैं तो चाहता हूं कि भाई वो रुक जाए, एज अ यूनाइटेड फैन आई रियली वांट हिम टू स्टे विद न्यूकासल। हाँ नहीं, एब्सोल्युटली, एंड मार्केट ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है। आई डोंट थिंक सो लिवरपूल विल एवर गो फॉर 150 मिलियन का बिड राइट नाउ विद एवरीथिंग्स कंसीडर्ड। मैंने ऑलरेडी लाला के साथ भी बहुत बार बात करी इस बारे में कि लाइक आई थिंक if Liverpool are actually smart enough for a really sustainable season, they should actually invest in a center back right now. उनकी center back पेरिंग एक इंजरी हुई राइट, कौन सा भी सेल किया उन्होंने, तो they might actually fall into a very big pit कि अटैकिंग ऑप्शन उनके पास काफी हैं। they don't even need to sell Darwin Núñez in my opinion अभी इस टाइम पे, जैसे फॉर्म में है वो। बट हम लिवरपूल की बात नहीं करेंगे। आई थिंक रोमानो का एक अपडेट आया है, सो लेट्स टॉक अबाउट अंशुमन भाई, रियलिस्टिक टारगेट्स क्या हो सकते हैं हमारे मिडफील्ड के, राइट? सो रियलिस्टिक टारगेट्स किसी को नहीं पता है ना भाई राइट नाउ। देखो वही वाली बात है, एज फैंस वी कैन टॉक अबाउट 15 नेम्स, ठीक है, उस 15 में से जरूरत नहीं है कि 15 में से कोई एक भी आए, क्या पता है दे हैव अ टोटली डिफरेंट प्लेयर इन देयर माइंड, वो कोई 16वां प्लेयर उठा के ले आए, ठीक है। सो राइट नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई हम एक्चुअली में किसको लेके आएंगे, ठीक है। कोई बंदा हमारे से लिंक भी नहीं है, कोई ऑफिशियली लिंक नहीं है, ऑफिशियली कोई बंदा लिंक नहीं है। इवन रोमानो ही इज सेइंग लाइक ये प्रोफाइल में ला सकते हैं, थोड़ा फिजिकलिटी कम, थोड़ा ये थोड़ा वो, बट नोबडी इज कमिंग आउट एंड सेइंग कि भाई इस बंदे के पास यूनाइटेड जाना चाहती है फॉर देयर मिडफील्ड चॉइस। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। तो मैं अभी लिटरली मुझे लगता है मिडफील्ड वाले ऑप्शन पे हम 100 नाम ले ले, हम उस पर 5 घंटे की स्ट्रीम कर लें, इट मेक्स इट्स नॉट गोना मेक एनी सेंस इन माय ओपिनियन। सो मिडफील्ड के ऊपर क्या होगा, and it also depends कि भाई सेस्को वाली डील हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मिडफील्ड अगर हम सेस्को डील कर रहे हैं तो मिडफील्डर आप तब तक नहीं ला सकते जब तक आप गर्नाचो को बेचो नहीं, right. So that is also a pointer when we talk about a midfielder. So let's see क्या होता है। बट अभी मिडफील्डर के ऊपर तो यार as I said ऐश भाई 5 घंटे बात कर लो, कोई लॉजिकल सॉल्यूशन उसका निकलेगा नहीं, क्योंकि नाम 50 आ जाएंगे, लेने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो भी किसी को पता नहीं है। Exactly. अब बजट की भी तो इशू है राइट नाउ। we haven't even prioritized the sell of Garnacho। अभी सैंचो सेल होना बाकी है, एंटनी सेल होना बाकी है। मैंने ऑलरेडी एक चीज मेंशन करी थी, लाइक आई थिंक रैटक्लिफ ने लास्ट ईयर ही मेंशन करी थी, दैट वी स्टिल हैव टू मेक लाइक 140 मिलियन यूरोस ऑफ पेमेंट ऑलरेडी दिस ईयर, प्रीवियस डील्स के इंस्टॉलमेंट्स की। तो पैसा है कि नहीं, वी डू नॉट हैव एनी आइडिया। लिंक्स ऊपर से उड़ती हुई आ रही हैं, मिडफील्ड कोई ऑफिशियली लिंक नहीं है। हम हैकनी के बारे में कितनी बात कर चुके हैं, बट हैकनी ऑफिशियली लिंक कभी हुआ नहीं हमारे से। एक प्रोफाइल है बट कभी लिंक हुआ नहीं। आई थिंक इन माय ओपिनियन, अंशुमान लेट मी नो आप क्या सोचते हैं, एडरसन वाज द मोस्ट रियलिस्टिक लिंक जो हमसे हुआ था राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन, और डू यू स्टिल सी कि अभी तक बिगिनिंग से, राइट? इन द बिगिनिंग दैट वाज द ओनली चॉइस दैट वी गॉट एक्चुअली लिंक टू। Yes. एक्चुअली लिंक टू, उसके अलावा और कोई ऐसा बंदा नहीं था जिससे एक्चुअली में हम लिंक भी हुए। इट वाज जस्ट वन गाय एंड दैट वाज एडरसन, और वो भी लिंक ऐसा नहीं था कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते चला, राइट, वो आया और चले गया। सो अभी तो मिडफील्ड सिचुएशन हमारी कोई लिंक्स नहीं है। नाउ what do we do about this Sesko situation? What's your opinion on this? Should we now try to hijack Newcastle's official bid and उस पे ऊपर करें, या फिर actually there's a chance कि हम actually we can secure Ollie Watkins at this point? वो obviously definitely 80 million से तो cheaper है। That ship has sailed in my opinion, है ना? वो already वो links आ गया and already there's a mandate. We are already out। 60 मिलियन 30 साल के बंदे का देने का कोई लॉजिक नहीं है। Yes. We have to understand the mindset of INEOS as well। वो सिर्फ पैसा खर्चना नहीं देख रही, वो देख रही है यंगस्टर पे पैसा खर्चा करो इन अ वे कि अगर हमारे लिए कुछ नहीं भी कर पाया तो वी कैन गेट सम रीसेल वैल्यू, और अगर चल गया तो भाई सबको बोलने को होगा ना कि भाई 80 मिलियन का स्ट्राइकर लाए हैं, हार के रख दिया देखो, ठीक है, वी डिड नॉट
बैक डाउन. सो यही वाली चीज है. मुझे लगता है, आई जस्ट फील, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि एक बिड हम जरूर मारेंगे. डेफिनेटली. दैट टू अगर और वो हमारा फर्स्ट एंड फाइनल होगा. इट्स नॉट गोना बी सेकेंडरी और थर्ड बिड और फोर्थ. ट्रांसफर सागा नहीं होने वाला. हाँ, सागा वागा कुछ नहीं होगा. टाइम भी नहीं है भाई. सेस्को से आप पूछोगे भाई तेरे को आना है कि नहीं आना है, बता. अगर तू आ रहा है तो हम बिड मारे, और अगर तेरे को नहीं आना है, then we are done. We are out. Go to Newcastle. All the very best for your career. That's it. Exactly. क्योंकि अगर इस टाइम पे यस न्यूकासल ने 80 मिलियन की एक प्राइस रखी है, बट अगर सेस्को और उसकी एजेंट एक डिसीजन ले लेके दे वांट टू कम टू यूनाइटेड, दिस वैल्यूएशन कैन एक्चुअली कम लिटिल डाउन मेरे हिसाब से, क्योंकि ये प्लेयर फोर्स कर रहा है मूव. बट अभी तक वैसे कोई कंफर्मेशन आई नहीं. आई थिंक कल शाम को ही आई थिंक साशा करके कोई जर्नलिस्ट है, आई डोंट ट्रस्ट दैट गाय बिकॉज ही हैज ऑलवेज नशेड़ी है वो नशेड़ी वो. हां, he hasn't had the best of कुछ भी उसका कुछ भी बेस्ट नहीं है. वो एवी उठता है किसी दिन एवी करके और 10 ट्वीट्स डाल देगा, और लोगों को लगता है कि अरे भाई इसने इतना कुछ डाला है तो भाई डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही. सो यस. हाँ, और बताओ, आज द कॉन्वर्सेशन सो सीरियस. अरे सीरियस नहीं है भाई, बात ये है कि थोड़ा सा मामला पलट चुका है ट्रांसफर विंडो के हिसाब से. एंड एक्सपेक्टेशंस थी, राइट, एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग, राइट. मैंने ऑलरेडी ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि वी माइट ओनली बी साइनिंग एम्बुमो एंड कुनिया एज आवर ओनली साइनिंग दिस सीजन, नोइंग यूनाइटेड व्हाट दे हैव डन बिफोर एज वेल. And knowing United what they have done before as well, maybe कोई free agent पर चली जाए, but I think United is not going to go that route in my opinion. तो अभी तो स्ट्राइकर सिचुएशन इज वेरी वेरी टफ एंड इंटरेस्टिंग राइट नाउ, बट दिस शिफ्ट्स मी टू दैट क्वेश्चन. अगर रोमानो के हिसाब से यूनाइटेड मिडफील्ड ऑप्शंस देख रही है, yes, we do not have any strong links. Let's talk about our current midfield right now, right? अब आपका प्री सीजन आपने सारे 3 गेम जरूर देखे होंगे, राइट? What has been your opinion right now? What's your analysis right now saying that is the midfield really working well right now? Are the current lot of midfielders that we have are actually good enough to survive this season or not? क्या बोलना चाहेंगे इस पे? क्या, देखो हमारे पास गेम्स कम है, so we can survive. It's not a problem. But then we will have to go horses for courses. It cannot be Bruno playing every game in that pivot. No. Possible है ही नहीं. ठीक है, आप वो खिलाते हो आपकी गान फट जाएगी, फिर आप घूमते फिरोगे इधर से उधर कि भाई हमारी सीजन ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर अ मिडफील्डर. ठीक है, मुझे एक चीज का थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं आया कि अगर व्हेन वी लुक एट कि अगर पिवट में ब्रूनो को खिलाना है, तो उसका कोई सेंस है नहीं, जबकि मैनेजर खुद ही बोल रहा था ब्रूनो प्लेज हिज बेस्ट गेम एज इनसाइड फॉरवर्ड. तो भाई तू उसको पिवट में क्यों खिला रहा है? पिवट में खिला रहा है. ठीक है, तो मुझे उसका लॉजिक नहीं समझ में आया. इन सम गेम्स इट कैन हैपन. ठीक है, एग्जैक्टली. in some games it can happen, not a problem, but it's not going to happen in every game. But then अगर आप तो आपने उसको बेचा, ऊपर से आप 70 मिलियन का एम्बोमो लिया है. ठीक है, तो दैट मींस दैट यू आर बेसिकली सेइंग कि वो पिवट में ही खेलेगा. तो भाई मतलब या तो यू आर कंफ्यूज्ड या यू हैव सम प्लान जहां पे ब्रूनो इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी गेम. देन आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि वो काफी गेम्स खेल रहा है जहां पे उसको पीछे से रिस्क लेना है. बट मेजॉरिटी ऑफ द जब हम बिग टीम्स वगैरह के अगेंस्ट खेलेंगे तो दैट मिडफील्ड विल बी डिफरेंट एंड हमारे विंगर से हमारे अप फ्रंट के ऑप्शंस डिफरेंट होंगे. दैट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. कैसेमिरो अगले साल जाएगा. आई हैव टू लुक एट हाउ कैसेमिरो हाउ सेकू कोने इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड. मैं भी वेट कर रहा हूं, मुझे वो देखना है. अगर आपने उसका लोन कैंसिल कर दिया है और अगर आप उसको प्री सीजन टूर पे भी लेके नहीं गए, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सेकू कोने दिस सीजन? मुझे वो देखना है, क्योंकि मुझे पता है इज वेरी टेक्निकल, इज वेरी वेरी गुड, बट देन फिजिकलिटी नहीं है. विदाउट फिजिकलिटी इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू सस्टेन इन दैट इन दिस सिस्टम. सो मुझे वो चीज देखना है, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यार मिडफील्ड के साथ आई एम ओके, बट अगर एक मिडफील्डर और आ जाएगा सो वी विल बी इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन. ठीक है, जहां पे आपके पास ऑप्शंस भी रहेंगे, जहां पे आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो. एक गेम में आप मैनो खिला सकते हो, एक गेम में उगारते कैसेमिरो खिला सकते हो, एक गेम में आप ब्रूनो खिला सकते हो. आप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप वहां पे उसको भी ट्राई कर सकते हो, क्या बोलते हैं, सेकू कोने इफ ही इज देयर, एंड आपके पास एक और मिडफील्डर है तो दैट विल डेफिनेटली बी इन द मिक्स एज वेल. सो वी हैव टू वेट एंड सी कि हाउ दैट एक्चुअली वर्क्स आउट. बट एक मिडफील्डर अगर आएगा then I am in definite favor of that. So fingers crossed. Right. And मैंने एक्चुअली बहुत बार इस बारे में बात करी है, राइट? मैंने इस बारे में and you let me know what you think, right? लास्ट 2-3 साल से हम यूनाइटेड को जो देख रहे हैं, राइट,
one of our major issues, like एक phrase हम हमेशा बोलते हैं, right अंशुमन भाई, the midfield is non-existent. एक phrase हमेशा आती रहती है in fans mind, आपके commentators हो गए, आपके United pundits, आप जिसको भी ले लो. um right now I think we might be short in the options. I think Abhishek का ये comment ले सकते हैं, right? Casemiro is past his prime, right? I would agree with this statement, but do you agree with this one? Casemiro has passed his prime. I think so. Yeah, He's of lost course, his he leg, has passed his prime. right? Yeah, Right. but वही है कि he can easily give you in certain games 60-65 minutes. And हम उसको FA कप में खिलाएंगे, हम उसको Carabao कप में खिलाएंगे. Right. You know, that's where we are going to rest Ugarte. And Casemiro still in a system जहाँ पे दूसरे बंदों से उसको help मिल जाए, Casemiro can still cause a lot of damage. People don't understand his heading ability and all. He can still cause a lot of damage. But वो yeah, X legs factor तो wise, है. हाँ. yeah, legs wise, he's not gonna be your main guy for 90 minutes. नहीं, fair. But Collier, so Collier पे अगर बात करेंगे हम, right? So if I'm talking about Collier definitely impressed last season whenever he was on the pitch before he got injured, right? आप वो goal line clearance ले लो, आप वो एक safe player है Collier. Like whenever you have, when he has the ball, एक थोड़ी सी safety net तो रहती है. Like in terms of he'll do the basics, right? Collier इस सीजन अगर लोन गया तो वी माइट बी फॉलोइंग शॉर्ट ऑन ऑप्शंस, एंड एज ए एब्सोल्युटली मेंशनड, सेकू कोने का एक लोन होने वाला था टू द ऑस्ट्रियन क्लब, आई थिंक, जो लोन रुक गया, राइट? बिकॉज एमरिम वांटेड हिम टू इंटीग्रेट अभी तक, लेकिन वो आया नहीं है इन द प्री सीजन एज वेल. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कॉलियर से आपको क्या होप्स हैं दिस सीजन. लाइक डू यू सी अगर लोन पे नहीं गया तो क्या हो सकता है इसका? लोन से नहीं भी गया तो भी बैकअप ही है. You know, it's not like that he will starting the games. बैकअप ही रहेगा वो. बट लोन पे चले जाएगा तो मेरे को ज्यादा पसंद आएगा, बिकॉज अगर आपका लोन मूव अच्छा होता है एंड यू कम बैक एज अ बेटर प्लेयर, यू नो, देन ऑल ऑफ अ सडन आपका जो अगला जो जो व्हेन कैसेमिरो विल लीव, वी माइट नॉट हैव टू गो आउट एंड स्पेंड अनदर 50-60 मिलियन अगर कोने और कॉलियर हमारे लिए काम कर जाते हैं तो. सो वी विल हैव टू वेट एंड सी, बट कॉलियर ऑन अ लोन ओनली if we cannot get a if we can get a midfielder, otherwise नहीं. हाँ, नहीं, फेयर. तो चैट ले लेते हैं फटाफट. काफी लोग ज्वाइन किए, 33 पीपल आर वाचिंग. भाई लाइक कर दो स्ट्रीम, एंड ऑब्वियसली इफ पीपल आर जॉइनिंग न्यू, दोनों चैनल्स को चेकआउट नहीं किया है, यू हैव टू फर्स्ट सब्सक्राइब टू यूनाइटेड रोड एंड अंशुमन भाई, ठीक है? ही इज गोना सून रीच 20K. जल्दी पहुंचा दो सब लोग, ठीक है? एब्सोल्युटली भाई, मतलब गॉड स्पीड, डेफिनेटली पहुंचेगा भाई. द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू डू, डेफिनेटली पहुंचेगा. थोड़ा चैट ले लेते हैं, थोड़ा सा चैट से कमेंट्स भी लेते हैं, एंड सबको थोड़ा हेलो बोल देते हैं, एंड यू कैन आल्सो आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल, राइट? यहाँ पे राम बख्शी बोल रहे हैं, कुड स्पर्स गो फॉर गर्नाचो नाउ दैट ह्यूमिन सॉन हैज लेफ्ट? इस पे आने वाला था एक्चुअली. डू यू रियली सी दिस पॉसिबिलिटी? ये नहीं है, राइट? अरे ये चेल्सी के लिए बैठा है ना, अगर एक्चुअली में जाना चाहे तो वहां पे तो स्टार्टर बनेगा. एब्सोल्युटली, वीक इन वीक आउट खेलेगा, वीक इन वीक आउट खेलेगा वर्ल्ड कप ईयर में फॉर स्पर्स. एंड इस बार तो भाई उसके पास है भी. एग्जैक्टली. इस बार तो आज बेसिकली अब आप बोल भी सकते हो कि यू हैव द स्पर्स आर इन द चैंपियंस लीग. अगले साल क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने. एग्जैक्टली. बट इस बार तो ये भी नहीं है दैट यू आर नॉट प्लेइंग द चैंपियंस लीग, यू विल बी प्लेइंग द चैंपियंस लीग. एग्जैक्टली. बट ये अकर लोगों की खत्म नहीं होती ना. जाऊंगा तो यहीं जाऊंगा, इस साले को बिठा दो बेंच पे और इसका वर्ल्ड कप खत्म कर दो. सीरियसली मैन, आई मीन गार्नाचो मतलब लास्ट जनवरी से ही काइंड ऑफ एक स्प्लिट में है कि ही वांट्स टू लीव. 60 मिलियन के लिंक्स आए हुए थे. दैट वाज एक्चुअली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी उस टाइम हमारे पास सेल करने का. लिंक्स ही थे, 60 मिलियन हम मांग रहे थे. वी वर ऑलवेज वांटिंग 60 मिलियन फॉर हिम. जनवरी में भी, अभी भी. उस टाइम पे भी किसी ने नहीं दिया, अभी भी कोई नहीं देगा. You know, at that point of time, we were getting what 40-45 million from Napoli. That was concrete. उसके अलावा और कोई नहीं. उसके अलावा कोई ऑप्शन ये नहीं है. And that's fair. But वही Amorim ने already वो चीज mention कर दी in his press conference against West Ham, right? कि INEOS have set a price on these players. अगर वो price point meet नहीं करी तो it's a high chance that we might actually welcome these players back. आपको actually में लगता है अंशुमन भाई कि do you think really that Garnacho will come back to the squad and who actually he will feature? I don't think so. Knowing Amorim, he'll still keep it on the bench और वो टीम के अलग से ट्रेनिंग करने वाला है. What do you think? उसको आराम से आप लोन पे भी डाल सकते हो ना. आइडियली आप नहीं चाहोगे डालना, बट दैट इज आल्सो एन ऑप्शन, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट लंबा है. हिज कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर अ लॉन्ग टाइम. आप सांचो के साथ नहीं कर सकते. सांचो अगले साल फ्री एजेंट है, सो यू हैव टू गेट रिड ऑफ हिम एनीवे. बट आप ये चीज गर्नाचो के साथ कर सकते हो. मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ
World Cup year है, you have already told him to get a New club. अर्जेंटीना फिर से वन ऑफ द फेवरेट्स जाएगी फॉर द वर्ल्ड कप, और इसको तो भाई वैसे भी उसको दिखाना है कि भाई आई कैन बी देयर, आई कैन बी विद द, तो भाई इसको सीधा सीधा बोल दो भाई, अगर तेरे क्लब की इतने की बिड नहीं आई तो तू बेटा खेल रहा है अंडर 21, तो या तो क्लब पकड़ ले, या तो कोई ऐसा क्लब ढूंढ के ला जो हमारे को इतने पैसे दे। सीधा सीधा बोलो ना, अरे उसके बाप का क्लब थोड़ी है जो तुम उससे डर रहे हो। एग्जैक्टली सबको पता है दिस पॉइंट ऑफ टाइम की जाना है, एक साल खराब कर दो औकात पे आ जाएगा। Ball is in our court at this point, and club in our court. Ball is in our नहीं court. बोल रहा, हाँ बॉल गर्नाचो के साथ बॉल इज इन आवर कोर्ट, हमारे सामने वाली टीम्स के साथ इट्स नॉट इन आवर कोर्ट, It's not on us. वहां पे हम 60-70 नहीं मांग सकते, बट यहाँ पे इस कमीने के लिए बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि भाई 50 दो तो लेके जाओ, और अदरवाइज इसको बिठा दो और बोल दो कि भाई यू आर नॉट गोना प्ले, आप पूरा सीजन आप अंडर 21 के साथ खेलो। Right. एक बार औकात याद दिला दो, अगली बार से सबको पता लग जाएगा भाई क्या औकात है। And 50 million is a fair valuation, right? From a deal, practical deal possibility, 60 to valuation, and 50 is a clear possibility. 50, I think, should be the benchmark. Yeah, Abhishek का एक chat लेते हैं. Do you think the quality of play is better looking at the last 2 games in the preseason and see more dynamic passing inside closed areas, better coordination? What do you think about this, Anshuman? Everything has improved. है ना? And I am very happy in a way that we are playing Premier League teams. हाँ. ठीक है. Yes. ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि we are not going just random, LAFC sort of things, sort of teams. या फिर आर्सेनल के साथ नहीं खेल रहे हम लोग. आर्सेनल तो चलो प्रीमियर लीग में वही है कि जब आप उस लेवल पे भी टीमें आप खेलते हो ना, देन यू आर कि आप किसको खिलाओ किसको नहीं खिलाओ, आप ये सब सोचने लग जाते हो. So here you have played 70 minutes in 2 games with a team that is basically going to start against Arsenal. ठीक है, आपने 20-20 मिनट फ्रिंज प्लेयर्स को दिए हैं. So I am very very happy the way we have taken these games into account, and I really hope कि जिस तरीके से इंटेंसिटी हम दिखा रहे हैं, we continue that intensity. हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हम दिखा तो देते हैं, पिछले सीजन हमने 15 मिनट दिखाए, इस सीजन ऑलरेडी हम वो 70 मिनट ले जा चुके हैं. So वो 90 मिनट में कन्वर्ट करना है. And we also have to keep one thing in mind. अगर आपने 20 मिनट में पहले 2 गोल मार दिए ना, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि गेम खत्म हो गया. Absolutely भाई, ये तो टाइम एंड टाइम देख चुके हैं ना अंशुमन भाई, इन द लास्ट सीजन एज वेल. ये पिछले गेम में देखा है हमने, वही पिछले गेम में वो सेमेनियो का गोल हो जाता तो मैच पलट जाता भाई. आपकी गांडें फट जाती वहीं पे, मुझे पता है, 100% श्योर था मैं. ठीक है, वो चीज आपको अपने सिस्टम से निकालना है, कि भाई मार दिया गोल, ठीक है, वी आर इन अ गुड पोजीशन, बट वी हैव टू कीप ऑन हिटिंग देम. इट्स नॉट लाइक कि 2 गोल पे गेम खत्म हो गया. नहीं, डेफिनेटली, एंड कीप ऑन हिटिंग देम. ऑब्वियसली आप स्कोर करो ना करो, एटलीस्ट यू हैव टू मेंटेन द कंट्रोल टॉप ऑफ द हाफ ऑफ द पिच में, वो बहुत जरूरी है. बट डेफिनेटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें, अभिषेक, वी सॉ सम ग्रेट थिंग्स एंड अंशुमन मेंशन राइट कि हम लोग डेफिनेटली कंट्रोल लूज कर रहे थे उस गेम पे. सेमेन्यो वाला गोल होता तो मैच पलट जाता. एंड एक सर्टेन सिचुएशंस पे मिडफील्ड भी नॉन एग्जिस्टेंट लग रही थी क्योंकि लेग्स नहीं है विद द लेग्स ऑफ कैसेमिरो. वो है, इट्स अ फैक्ट. वी आर ट्राइंग टू नेविगेट इट विद बेटर प्रेसिंग, ताकि वो L10s और R10s ना बहुत ड्रॉप कर रहे हैं इस टाइम पे टू हेल्प द मिडफील्ड एट दिस पॉइंट. वही बात है, अगर यूनाइटेड एक्चुअली रियली ब्रिंग अ ग्रेट मिडफील्डर पिवट में टू हेल्प उगारते, तब वो बिल्डअप प्ले और सारा सिचुएशन कंट्रोल, एथलेटिक मिडफील्डर जो बात कर रहे थे हम लोग, वो चीज काफी हद तक सॉल्व हो सकती है. एंड इट विल एक्चुअली अनलॉक द लाइक्स ऑफ डॉर्गू एंड अमाद ऑन द विंग बैक्स. टॉकिंग अबाउट द गेम, how was your impression, Anshuman bhai, of Patrick Dorgu last 2 games? I think very impressive. I think finally उसके प्रोफाइल निकल के आ रही है. डॉर्गू एंड हॉयलैंड, जब फैन बेस को किसी बंदे को गाली देने में मजा आता है ना, तो उसको प्रेज करने में भी मजा आना चाहिए when he is showing signs of improvement. ये हमारे फैन बेस का दोगलापन है. ठीक है, जो शाइनी टॉय देखा नहीं उसको सर पे चढ़ाने को तैयार. people want me to accept कि भाई 13 गोल वाला सेस्को इज वर्थ 80 मिलियन, बट जिस बंदे ने प्रीमियर लीग में 19 साल की एज में 11 गोल मारे हैं, उसकी वैल्यूएशन 25 मिलियन की है. क्यों? क्योंकि उसको निकालना है, उसको डील में डाल को कैसे भी निकाल दो. तो ये दोगलेपने पे तो मैं जाता ही नहीं. ठीक है, उस बंदे के एक सीजन में 13 है, एक सीजन में 14 है. यहाँ आएगा, मैं सपोर्ट करूंगा, बट अगर कोई मुझे बोल रहा है ही इज 80 मिलियन स्ट्राइकर, तो भाई माफ करो. नहीं, 80 मिलियन तो डेफिनेटली नहीं है. ठीक है, आपको उसको 80 मिलियन पे करना है, वो आपकी मर्जी है, बट मेरे लिए वो 80 मिलियन का स्ट्राइक करना है ना, वो होगा. ठीक है, तो आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद डॉर्गू एंड एज वेल एज हॉयलैंड.
एक चीज जो मैं पिछले साल बार बार बोल रहा था कि भाई तू डिफेंडर्स के साथ ना कुश्ती खेलना बंद कर, ठीक है। यू हैव द पेस जहां पे तू किसी भी डिफेंडर को टेक ऑन कर सकता है, यू हैव द पेस जहां पे तू पीछे रन्स बना सकता है, एंड वो हमने पहले 2 गेम्स में देखे, ठीक है, दैट ही इज मेकिंग दोज रन्स, ठीक है, ही इज गेटिंग इनटू दोज जोन्स जहां पे आप क्रॉस करोगे तो यू हैव अ स्ट्राइकर टू फीड, ठीक है। और ये चीज पिछले साल नहीं थी ना, तो विंगर क्रॉस मार रहा था, और जब विंगर क्रॉस ही नहीं मारा था तो स्ट्राइकर वाज लाइक कि मराओ यार अपनी, मैं क्या ही खड़े होऊंगा वहां जाके, ठीक है। सो वही वाली चीज है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ इंप्रूवमेंट ऑफ बोथ द गाइज, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डोरगू स्पेशली, क्योंकि डोरगू को तो 4 महीने में ही लोगों ने बोल दिया कि भाई क्या फुद्दू साइनिंग है। भाई अंशुमन भाई, मैं बता रहा हूँ, मैंने जब बहुत मतलब काफी कोलैब्स रिसेंटली किए विद नॉन प्रीमियर लीग क्रिएटर्स, राइट, दे आर रेटिंग डॉर्गू वेरी वेरी हाई। मैंने आई थिंक सूरज के साथ करी थी स्ट्रीम एंड जयंत के साथ, दे आर एक्चुअली लुकिंग, व्हाट दे सेड इज, हम जब पैट्रिक डॉर्गू को देखते हैं, वी आर एक्चुअली लुकिंग हिम एट रियल मैड्रिड इन 3 or 4 years, एंड आई वाज बैफल्ड बट नॉट सरप्राइज्ड एट द सेम टाइम, बिकॉज मेरे को पता है कि क्या प्रोफाइल डॉर्गू लेके आ रहा है इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी, पेस, ब्रूट पेस। अगर उस बंदे को आपने अनलीश कर दिया, राइट। अब मैं और एक चीज नोट किया इन द लास्ट प्री सीजन गेम, राइट, डॉर्गू ओवरलैप भी नहीं कर रहा था भाई, वो अंडरलैप भी कर रहा था, अंदर आ रहा था, अंदर आके खेल रहा था टू सपोर्ट द मिडफील्ड। तो आई थिंक ये गेम काफी चेंज हुई है विद डॉर्गू, आई थिंक वेरी इंप्रेसिव। तो डेफिनेटली यार वुड लव कुनिया के साथ लिंकअप ऑलरेडी बिठा रखा है ना उसने, स्ट्रेट अवे हम लोग दैट वेस्ट हैम के लिंकअप साथ। विद कुनिया, या दैट लिंकअप विद कुनिया इज स्ट्रेट अवे देयर, ठीक है। उसको पता है कि कुनिया विल पास। राइट आप राइट पिछले राइट। साल देखो डोरगू के रन्स, गर्नाचो बॉल ही नहीं देता था यार। गर्नाचो नहीं ने देता था, नहीं देता था। पूरे सीजन में गर्नाचो ने 4 पास करे हैं हॉयलैंड को। राइट। और इसके 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 फैंस जो हैं, दे हैव द ऑडेसिटी टू से यार गर्नाचो तो हमारा बेस्ट प्लेयर था, उसके गोल असिस्ट नंबर्स देख लो। अरे 80-90 शॉट में 3 गोल मार दिए तो कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया तुमने। मैंने मैंने एग्जैक्टली इस चीज पे मैं करी थी, राइट, एंड लोग, सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू दिस स्टैट, राइट। अगर आप होलिस्टिक स्टैट देखो, 33 गोल्स एंड असिस्ट इन 2 सीजन, प्रीमियर लीग में हाँ 38 गेम में सिर्फ 6 गोल और 7 असिस्ट है भाई। ओनली 13 गोल इन्वॉल्वमेंट्स इन द होल 38 गेम्स। एंड भाई वो दीज भी आर देखो, डिसअपॉइंटिंग नंबर्स 13 फॉर अ विंगर इज नॉट दैट बैड। मैं ये नहीं बोल रहा कि इट्स बैड, बट देन अगेन इन जो गेम। आपका टैलेंट है, हाँ, जो आपका टैलेंट है उसके हिसाब से यू कैन डू मच बेटर। एब्सोल्युटली यार। अगर आपके असिस्ट नंबर्स बहुत ज्यादा होते, अगर आप सिर्फ अपने ही शॉट्स पे शॉट्स बजाने में नहीं लगे रहते, राइट 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 ठीक है। सो दैट्स द थिंग। राइट। मेटल का क्वेश्चन है, डू यू थिंक ओनाना विल आल्सो इंप्रूव लाइक द अदर प्लेयर्स और डेड एंड? आई थिंक इट्स अ डेड एंड भाई, मेरे हिसाब से, बट व्हाट डू यू थिंक अश्विन? मेरे हिसाब से डेड एंड है भाई, दैट्स व्हाई वी आर लिंक्ड विद सेनेल उसको भी एमएस। एक कंपटीशन चाहिए, उसको भी एक कंपटीशन बाय एंड ईयर से यार। अब मेरा अगर मुझे इंप्रूव करना है, राइट ठीक है, और मेरे को एक ऐसे बंदे के साथ आप कंपटीशन में डाल दो जो कि दिन भर सिर्फ बेड पे सोया रहता है, राइट। ठीक है, तो मैं उसको देख के इंप्रूव क्या ही करूंगा। मैं तो बोलूंगा यार जितना मैं कर रहा हूँ उसी में मैं खुश हूँ, हम्म। या उसी में एब्सोल्युटली। खुश हूँ, मेरे को और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और मोटा सो पैसा भी तो मिल ओनाना, रहा है। एग्जैक्टली, सो आई दैट्स व्हाई आई सेड लेमेंस, इसको बाय एंड ईयर को निकालो, लेमेंस विल बी अ ब्रिलियंट साइनिंग। है सो ना? वी विल सी हाउ दैट गोस। या व्हाटएवर यू, एटलीस्ट हम लोग देखे नहीं है, लेट्स बी या एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, लाइक वी हैवंट सीन लेमन्स लाइव, बट जो हम लोग ने स्टैट्स, आप रिसर्च, ऑब्वियसली व्हेन अ प्लेयर इज लिंक्ड हम लोग स्टैट्स रिसर्च करते हैं। आई थिंक मैंने या नोटिस पॉइंट भी बहुत बार बोला है। आई थिंक अगर एक बंदा एक लीग में पर गेम 5 से 6 गुड सेव्स विद 80% सेव रेट, अच्छी मतलब पासिंग रेंज भी थोड़ी डिसेंट है, एटलीस्ट एक गोलकीपर ना जो बेसिक्स जस्ट डज द बेसिक्स, राइट, कोई आउट ऑफ द बॉक्स, कोई पासिंग रेंज वेंज कुछ नहीं, जस्ट पोजिशनिंग अच्छी हो, सेव्स अच्छे हो, टॉल हो, डिफेंस को मार्शल करे, दैट्स ऑल वी वांट आई थिंक एट दिस पॉइंट गोलकीपर से। आई थिंक लेमन्स एक अच्छा स्मार्ट साइनिंग, श्रूड साइनिंग, प्राइस पॉइंट के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से बहुत बढ़िया साइनिंग हो सकता है फॉर श्योर। तो और क्वेश्चंस लेते हैं and it's डेफिनेटली। just for 15-16 million, so it's not gonna cost a lot of money either. मतलब आपके दोस्त लोग काफी आए हुए हैं आज। अरे अनिश भाई क्या हाल चाल। Yes, yes. I'm hating the fact that Amorim should at least treat his player good, or else another 10 hag moment. Enrique hated Colomani, but never gonna this far. Okay, fair, fair. अरे हेट बात नहीं है. Amorim is actually trying to really uh like have at least a culture कि player is never bigger than the club. वो बहुत जरूरी है. And
ये दोनों प्लेयर्स कुनिया और एम्बुएमो, आई थिंक राइट नाउ व्हाट इज एब्सोल्युटली मेंशनड कि दोनों कितने हम्बल हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्क एथिक राइट नाउ। कुनिया के ऑब्वियसली लिंक्स हैं इन लाइक विद व्हाट हैपेंड विद हिज वुल्व्स स्टफ एंड व्हाट हैपेंड विद बोर्नमथ, बट ही इज ऑलरेडी ब्रॉट दैट फील गुड फैक्टर इन द स्क्वाड विद मैथ्यूज कुनिया। एंड एम्बुएमो बहुत हम्बल आदमी है भाई, वो इसके इंटरव्यूज देख लो आप, ऑलरेडी ही हैज मेंशनड कि उसकी वर्क एथिक कितनी अच्छी है। आई थिंक दीज टू आर वेरी वेरी फैंटास्टिक साइनिंग्स इन माय ओपिनियन। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। प्रियांश बोल रहे हैं कि हॉलैंड इज अ स्ट्राइकर हु इज मेकिंग गुड चैनल रन्स। यस, काइंड ऑफ सिमिलर रन्स मैं स्टैट कंपेयर कर रहा था बट वॉटकिंस के साथ। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ स्ट्राइकर इन एमएनएम सिस्टम, बट वो लास्ट सीजन उसने बहुत बट बात ये है ना, एंड अंशुमन भाई आप बोलो इस पे, लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन हॉलैंड राइट नाउ? आई नो फर्स्ट सीजन काफी इंप्रेस किया, सेकंड सीजन वाज एब्सोल्यूट डिसअपॉइंटिंग। होल्ड अप प्ले भी बहुत जरूरी है इस फॉर्मेशन में। डू यू रियली सी हॉलैंड एक्चुअली like improving this season? या actually you are thinking of situation कि नहीं, I think this is the right point to sell Hoyland at this point. What's your thought? मैं 22 साल के बंदे को थोड़ी सेल करूंगा यार, अगर ऐसे करते रहोगे तो फिर तो टीम ही बेच दो, फिर तो ले आओ भाई 35 साल के बुढ़े जो कॉन्टे करता था, ठीक है, जो मोरिनियो एंड में करने लगा, जस्ट टू मेक श्योर कि हम टाइटल जीत जाए, उसके बाद अगले साल से फर्क ही नहीं पड़ रहा, so you have to win the title but you also have to win in a certain way at the same point of time. yes, improvement उसको करना है होल्ड अप में, ठीक है। एक चीज ये कि you don't have to push yourself to the defender a lot, ठीक है। हाँ, कुछ ज्यादा ही आप हमेशा रन बनाने का देखो, डिफेंडर खुद ब खुद फाउल करेगा यार। जब आपको रेफरी देखता है कि आप ऑलरेडी चिपके पड़े हो डिफेंडर के साथ, ठीक है, तो रेफरी के माइंड में पहले बात ये रहता है कि ये फाउल देखने को देख रहा है, ठीक है। ऑल यू वांट टू डू इज बेसिकली कि पीछे से थोड़ा सा भी धक्का लगेगा तो गिरेगा ही बंदा। ब्रिलियंट पॉइंट, so he is looking for that, so he has to make those runs। जब वो रन्स बनाएगा ना, कोई टच नहीं कर पा रहा था यार उसको पिछले वाले गेम में when he was making those runs। पेस भी इंप्रूव हुई है भाई, लास्ट सीजन से काफी ज्यादा पेस इंप्रूव हुई है हॉलैंड की। यार मैं बात ये बार-बार बोल भी चुका हूं। एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक। आई थिंक अगर लेट्स से वी डू नॉट इवन साइन अ स्ट्राइकर ना भाई, we can actually play this 3-4-1-2 फॉर्मेशन जो स्पोर्टिंग में खेला हुआ है एमरेम। अगर लेट्स से आप कुनिया और एम्बुएमो एज अ स्ट्राइकर ऑप्शन लेते हो, या कुनिया एंड क्यों कुनिया प्राइमरीली स्ट्राइकर नहीं वाला, नहीं वो ऑप्शन आएगा ही नहीं। साढ़े 4 साल में कुनिया वाला नहीं आएगा, उसने आज तक नहीं खिलाया, वो आगे भी नहीं खिलाएगा। स्पोर्टिंग में उसके 100 कुछ मैचेस है, उसमें एक गेम में उसका फॉर्मेशन चेंज नहीं है फ्रॉम द गेम 1 टिल द लास्ट गेम। उसका एक स्ट्राइकर होता है, चाहे वो आपका गेकोरेश खेले, चाहे वो आपका पीछे से उसके जगह पे हार्डर जब आता था तो हार्डर खेले, ठीक है। उसने कभी सिस्टम चेंज ही नहीं किया। मैं वही चीज समझाता हूं लोगों को भी कि भाई चैट में अपने हिसाब से फॉर्मेशन मत बनाओ टिल द टाइम यू एक्चुअली सी हिम चेंजिंग। और ये नहीं बोल रहा मैं कि एंड के 5 मिनट में उसने मैगवायर स्ट्राइकर खिला दिया तो वो अगले मैच में मैगवायर, वो अलग की चीज है, ठीक है। बट ही इज नॉट गोना चेंज द सिस्टम। ये अगर उसको सिस्टम के हिसाब से करना होता ना तो वो एम्बुएमो और कुनिया में से सिर्फ एक लाता, और वो पैसा वो अभी तक खत्म करके एक स्ट्राइकर ला चुका होता। बट वो सिस्टम में जाएगा ही नहीं। उसका सिंपल सा है फंडा, आई हैव टू सी उसका प्लान बी। उसका प्लान है, सबको दिख रहा है। प्लान बी की बात कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। क्या ये उसका प्लान भी वही रहता था भाई, उसका प्लान भी वही है। He used to make like to like changes, ठीक है, right. आपका थोड़ा सा पोजीशन में अगर शिफ्ट कर दिया बंदे को तो कर दिया, बट वही होता था। मतलब उसमें ये चेंजेस नहीं होते थे कि ऑल ऑफ अ सडन कि 3 बंदे अब आगे खड़े हैं। इट वाज नेवर गोना गो इन दैट डायरेक्शन। सो फॉर्मेशन चेंज की जो भी बात करता है, मैं थोड़ा सा कट ऑफ भी कर देता हूँ, लोगों को थोड़ा रूड लग जाता है, बट फॉर्मेशन चेंज वो बंदा नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। उसने बोला हुआ है कि आई हैव अ माइंडसेट, आई हैव अ प्लान, मैं उसी के साथ जाऊंगा, उसी के साथ अगर सक्सेसफुल होता हूं तो ठीक, नहीं होता हूं तो आई एम आउट, राइट। सो इस तो लेट्स से ही स्टिक्स विद दिस करंट फॉर्मेशन, तो आप उसमें जर्गजी को कहां देखते हैं? बिकॉज अभी जर्गजी सिर्फ बेंच पे, लाइक जर्गजी तो आज लाइक ऑब्वियसली इंपैक्ट पे ही आएगा, बट कहां? एज अ स्ट्राइकर और एज एन L10 R10? कुनिया वाला पोजीशन पे, L10 पे, राइट? फेयर L10 के लिए ही हमने उसको रखा हुआ है। हम मे बी अगर जहां पे वैसा हो कि भाई कुनिया एम्बुएमो और मेकिंग दोज रन्स, तो हम उसको फॉल्स नाइन वाले एक रोल में डाल सकते हैं इन सर्टेन गेम्स, जहां पे अगर बंदे बहुत फिजिकल है तो इसकी टेक्निकल एबिलिटी तो बहुत लाजवाब है, एंड हिज स्किल सेट विद लिंकिंग ऑफ द प्ले इज फैंटास्टिक। तो अगर वहां पे है जहां पे हमें बिल्कुल सामने वाले के डिफेंस को खोलना है,
यू नो, एंड देयर सेंटर बैक्स आर लाइक सिटिंग बैक डीप, वहां पे आप रासमस की जगह पे ऑप्शन ले सकते हो जर्गजी का, जहां पे अगर वो लिंक अप कर गया यू नो अलोंगसाइड एम्बुएमो एंड कुनिया, थोड़ा एंड कुनिया उसके को बाद आगे अगर भेजने के लिए, यू नो। हाँ हाँ कुनिया आगे जा सकता है, एम्बुएमो रन मार सकता है, थोड़ा सा जर्गजी ड्रॉप इन कर सकता है, ड्रॉप इन करेगा। सो यू ऑल ऑफ अ सडन यू हैव लॉट ऑफ यू नो ऑप्शंस। तो फ्रंट लाइन में हमारे पास ऑप्शंस हैं। मेसन माउंट ऑन द राइट, अगर वो उसका गेम निकल गया ना भाई, यू नो, तो फिर हमारे को लगेगा अबे यार हमने 70 मिलियन क्यों खर्च कर दिए एम्बुएमो पे, ठीक है। बट फिर वही है कि आप मेसन माउंट के ऊपर वो ट्रस्ट करके नहीं जा सकते फॉर द एंटायर सीजन। एग्जैक्टली, उस पे एंड एग्जैक्टली उस पे आने वाला था। थैंक्स अनिकेत फॉर दिस कमेंट कि आई थिंक मेरा पीओवी अंशुमन भाई उसमें काफी क्लियर है कि राइट नाउ मुझे व्हाटएवर आई हैव सीन लाइक फ्यू फ्लैशेस देखे हैं मेसन माउंट से, बट मुझे नहीं लगता कि आई थिंक मेसन माउंट एक कंफ्यूज सिचुएशन पे इन टर्म्स लाइक मेसन माउंट के पास अपनी एट्रीब्यूट्स क्या है, बॉक्स टू बॉक्स दौड़ने की है, लेकिन उसमें वो डिफेंसिव कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं है। ही कैन ट्रैक बैक बट डिफेंसिवली उतना उसमें आउटपुट नहीं है। क्या वो विंगर है, क्या वो कैम है, क्या वो फिट इन कर सकता है इन दैट एल10, क्या वो फिट रह सकता है एल10 नहीं है, वो एंटेल तो R10 भी नहीं है। R10 R10 वो R10 ही रहेगा, आइदर ही विल बी एन R10 और यू नो बैकअप, या तो वो फिर वो किसी रोल में नहीं, यू नो यू माइट सी हिम वंस इन अ व्हाइल, यू नो काराबाओ एफए कप में, जहां पे वो मैनू के साथ खेल जाए इन द मिडफील्ड, अगर कोई गेम वैसा है यू नो जहां पे हम बिल्कुल 7-8 बंदों के साथ अटैक कर रहे हैं, दैट सॉर्ट ऑफ अ गेम। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि R10 के अलावा माउंट का कोई ऑप्शन है इस टीम में। राइट या अभिजीत बोल रहे हैं एल्टन खिला देता है तो भाई खिला दो। वैसे तो यार हमने भी पॉगबा को लेफ्ट विंग पे खिला दिया था। वो तो खेला हुआ फिर वहां वही पे वाली बात है, माटा ओले के माटा अंदर को लेके आए नंबर 10 के लिए, वैन हाल ने उसकी गांडी मार दी राइट पे विंग खिला खेलता खिला था, के, राइट विंग खिलाता था, खत्म ही कर दिया प्लेयर खत्म कर बिल्कुल। दिया उसका। राइट, एब्सोल्युटली Zerxy is the solution for low blocks. Yes, वो ऑपोजिशन पे ऑपोजिशन डिपेंड करेगी, हम क्या कौन सा स्ट्राइकर क्या खेलने वाला है, कौन से मोमेंट पे कौन सा प्लेयर आने वाला है। आई थिंक yes, Zerxy solution for low blocks definitely, but Zerxy also could be a solution for transitions as well, क्योंकि बंदा जब अगर बॉल खींच के ले आता है, राइट, उसकी फर्स्ट टच बहुत अच्छी है, राइट, लेट्स बी एब्सोल्युटली फेयर। वो ट्रांजिशन पे अगर विंगर्स को आपके विंग बैक्स को रिलीज करता है ना, आई थिंक व्हाट डू यू थिंक अंशुमन भाई, डू like I know Zerxy bench पे रहेगा, but will we see a better version of Zerxy this season, or do you see कि 100% नहीं है? we will see a better version of everybody, हर है ना? किसी का हम बेटर 100%. वर्जन देखेंगे, Definitely, ठीक है। definitely. एंड जिनको हमने निकालना था उनको हमने ऑलरेडी ठिकाने लगा दिया है कि भाई अपना क्लब ढूंढ लो, वरना एक साल की बात है हम झेल लेंगे तुम्हारे को, Exactly, ठीक है। exactly. एक साल की बात है हम तुम्हारे को झेल लेंगे। क्योंकि सो वी आर गोइंग टू सी अ मच इंप्रूव्ड टीम। आई एम नॉट सेइंग कि हम प्रीमियर लीग वगैरह जीतेंगे, बट स्टिल नहीं प्रीमियर लीग तो नहीं। एंड रियलिस्टिकली मैंने इसलिए ये बात भी करी है, लाइक फ्रॉम इफ वी फिनिश 15th एंड अगर हम यूरोप नहीं खेल रहे वी गोना प्ले दैट ऑड कैराबो कप मिडवीक पे, अगर सिर्फ एवरी वीक वन गेम खेल रहे हैं अपन, इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। मैं तो आई थिंक I know we have had some financial losses not qualifying for UCL and all, but मेरे हिसाब से it's a blessing in disguise, ताकि मैं तो बहुत खुश हूं। अभी वो होलिस्टिक रीबिल्ड हो सकता है कि एवरी प्लेयर विल प्ले वंस पर वीक, फिटनेस मेंटेन रहेगी, विल हैव लेस इंजरीज फॉर श्योर, ठीक है, मेंटल फटीग नहीं रहेगी, प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, अपने यंगस्टर्स आगे और बढ़ सकते हैं, एंड देन विल बी एबल टू सी कि एमरिम क्या करना चाहता है इन दिस विद दिस होल स्क्वाड। आई थिंक वो ट्रस्ट फैक्टर इवन विथ हेटर्स ऑफ एमरिम वो वापस आएगा, बिकॉज ऑलरेडी प्री सीजन में वो स्पार्क दिखने लगा है। एंड टू द पॉइंट आप जो बोल रहे थे, राइट, वी आर प्लेइंग द प्रीमियर लीग टीम्स, नॉट ओनली प्रीमियर लीग टीम्स दैट वी एक्चुअली स्ट्रगल्ड अगेंस्ट, लाइक जैसे बोर्नमथ के साथ वी स्ट्रगल्ड, एब्सोल्युटली स्ट्रगल्ड भाई, उनके साथ खेलना जरूरी था। वेस्ट हैम के साथ वी प्लेड, आई थिंक द नेक्स्ट एवर्टन गेम जो कि लो ब्लॉक के लाइक दे आर द लाइक मास्टरपीस तो नहीं बोल सकता, बट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स दैट प्ले लो ब्लॉक्स, राइट, इन लास्ट सीजन इन द प्रीमियर लीग, उनके साथ विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे अनलॉक इट। और उस पे Zerxy, आई डोंट थिंक सो Zerxy आने वाला है, बट कुनिया एंड एम्बुएमो का पार्टनरशिप विल हैव टू सी देयर, बट डेफिनेटली बट माउंट ये को जो 10। पॉइंट था ना कि यू नो मिसिंग अ यूसीएल, यू नो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि वो फॉल्स सेंस ऑफ जो बोलते हैं ना ऑप्टिमिज्म कि भाई यूसीएल जा रहे हैं हमारे पास सब कुछ, ये साले यूसीएल का पैसा लेके डकार नहीं मारते। एग्जैक्टली टीम में साइनिंग करने की बात दूर की है। तो आई एम यू नो एंड वी हैव अ हिस्ट्री जहां पे हम सबसे ज्यादा पैसा तब खर्चते हैं जब हमारे पास बेसिकली उस तरीके से कोई बंदा यू नो जो उस तरीके से हम यूसीएल में नहीं होते। सो आई एम हैप्पी दैट वी आर नॉट इन द यूसीएल। फायर एंड ये मैंने बहुत बार बोला इस चीज पहले, मैं तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज देखता हूँ इस चीज को। चेल्सी ने भी वही चीज करी थी व्हेन दे एब्सोल्युटली लाइक वेयर डॉग शिट भाई, 10th फिनिश 12th फिनिश करी थी, चैंपियंस लीग लूज करी थी, द नेक्स्ट सीजन
आई एम नॉट सेइंग कि प्रीमियर लीग जीत जाएंगे, बट दे एब्सोल्युटली हैड द टाइम एंड दैट होल पेशेंस कि वो अपने प्लेयर्स को अनलॉक कर सके. सो मैं तो इस चीज को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही देखता हूँ, ताकि एटलीस्ट वी कैन मेक सम स्मार्ट साइनिंग, कि पता तो चले कि जब ट्रांसफर बजट इतना टाइट होता है ना, आप कौन से प्लेयर्स को ले सकते हो दैट फिट्स इन द सिस्टम. ठीक है, वो थोड़ी सी माइंडसेट भी चेंज होगी ट्रांसफर विंडो के हिसाब से. थोड़ा सा कमेंट्स लेते हैं. और अंशु भाई, मुझे लगता है यूनाइटेड नो सेस्को प्राइस, still they want in negotiations, मतलब they need him anyhow, but Fab also said Sesko is ready to. Sesko ने I think अभी तक डिसीजन तो अपना दिया नहीं है ना, so United is still in the picture only if Sesko agrees, right? हाँ, अदरवाइज हम बिड ही नहीं करेंगे. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. वी आर नॉट गोना बिड टिल सेस्को सेज ओके बॉस आई वांट टू कम. ठीक है, वो नहीं होगा. वी आर नॉट गोना मेक एनी बिड, क्योंकि वी विल मेक अ मॉकरी ऑफ आवरसेल्व्स. अगर इसके अलावा भी अगर हम बिड करते हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ मॉकरी ऑफ आवरसेल्व्स. तो हम बिड नहीं करेंगे. दैट्स व्हाट आई फील. जब तक वो सामने से हाँ ना बोले. ये एक क्वेश्चन है गौरव का. अच्छा, लेजिट क्वेश्चन एक्चुअली. सिर्फ एफकॉन का पीरियड देखना होगा कैसे खेलेंगे हम, क्योंकि एफकॉन के हमारे कितने प्लेयर्स जाने वाले हैं? एम्बुमो, ओनाना, अमाद, राइट? और वो कितने, एक महीने का पीरियड होने वाला है. मजरावी भी जाएगा, राइट? एंड गॉड फॉरबिड भाई उस टाइम पे इंजरीज नहीं हुई तो वी शुड बी ओके, बट अगर इंजरीज हुई टू द करंट स्क्वाड, देन वी आर इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर. वेरी 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 मच, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड तो गायब हो रहा है. अमाद एम्बुएमो, एक आपका राइट नंबर 10, एक आपका विंग बैक, दोनों गायब. तो आपको मेसन माउंट और डालो के साथ काम चलाना पड़ेगा. डालो के साथ, अनलेस और अनटिल देयर इज एन एंटनी, कि भाई आप फिर एंटनी को उस पोजीशन में, या फिर आप आगे एंटनी को खिला दो. एंटनी देखो, एंटनी अगर नहीं जाता, आई वोंट माइंड इफ इट्स अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, क्योंकि एंटनी का हैव सम ट्रेट्स जो कि वो यूटिलाइज कर सकता है. बट देन दैट्स टू बी सीन. I think AFCON के टाइम पे मेरे हिसाब से I think Bruno will shift to that pivot, not pivot. Bruno will shift to that R10 role या L10 role, and then we might actually see अगर Mainoo fit रहा, कि some games we might actually see Collier. Mainoo will be fit. Mainoo को लोगों ने ऐसा बोल दिया कि जैसे Mainoo तो हर 5 गेम में अनफिट हो जाता है. अरे भाई, एरिक टेन हाग ने उसकी मार ली, उसके पहले साउथगेट ने मार ली. ठीक है, exactly. और जब नए सिस्टम में आप आते हो उस तरीके से, तो आपको टाइम तो लगता ही है. फैनबेस को लगता है कि भाई यहाँ पे बैठ के बस बोल दो कि अरे प्रोडिजी है तो प्रोडिजी को कुछ करना ही नहीं है. अरे प्रोडिजी है तो भाई उसको और एफर्ट डालना है. जस्ट लुक एट हिम, हाउ फिट एंड हाउ मच मसल ही हैज बेसिक. ये एग्जैक्टली. yes definitely. and वो बल्क अप जरूरी है to absolutely beat the press. जब प्रेशर आएगा ना आपको 2-3 मिडफील्डर्स के, जहाँ आपको बैक ऑफ द शोल्डर से साथ खेलना है आपको, so you need that physicality to go past the midfield, right? तो बहुत जरूरी है. तब अगर वो चीज मेनू और उगारते अगर दोनों कर ले, आई थिंक उगारते ने भी फिजिकली और बिल्ड किया इस सीजन. मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, सारे बंदे करके आए हैं, सारे बंदे ट्रेन करके आए हैं. हां, सबको प्रॉपर प्लान, सबको ट्रेनिंग मिली है. क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल प्लानिंग हुआ था सारे का. एंड दे हैव कम बैक एंड दे हैव बेसिकली अचीव्ड द रिजल्ट्स. सिर्फ प्लानिंग नहीं हुआ. राइट एंड एब्सोल्युटली वो चीज देखने को हमें मिल रही है. एंड दिस इज वेयर आई थिंक अगर मेनू का वो गेम अनलॉक करके आता है, राइट, वी ऑलरेडी सी लीड्स गेम पे कैसे वो विंग्स को अनलॉक कर रहा था. बट एक क्वेश्चन है मेरा, राइट, आई नो वो एफकॉन के टाइम पे विल हैव टू स्टिक विद डियोगो डालो और राइट विंग बैक. मेरे पीओवी से डियोगो डालो, इट्स अ ग्रेट टाइम नेक्स्ट सीजन के शुरुआत में टू सेल डियोगो डालो, बिकॉज वो बंदा फुल बैक है, विंग बैक नहीं है, अटैकिंग विंग बैक. इसमें आपका क्या है? मुझे तो वो ना तो फुल बैक लगता है ना तो विंग बैक लगता है. कंफ्यूज्ड है, मतलब कंफ्यूज पर मुझे नहीं लगता. फैनबेस 6 महीने अच्छा खेला था तो फैनबेस उसको नया कैप्टन बना रहा था. मेरे को आके गाली दे रहे थे लोग, देखो डिएगो डालो कैसा खेला. मैंने बोला देख लो भाई, आ गया अपनी औकात पे. नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, अपनी औकात पे आ गया. राइट एब्सोल्युटली फेयर. नहीं डिएगो डालो बिकेगा नहीं. देखो पहली बात, बिकेगा भी तो वो 10-15 मिलियन में कोई लेगा तो लेगा. हमारे सेल्स करने की जो प्रॉब्लम है ना, वो अभी परसिस्ट करेगी विद द फॉर्मर प्लेयर्स दैट वी हैव. जो हम नए लेके आ रहे हैं उनको हम फ्यूचर में अगर सेल करेंगे तो शायद अच्छे से करेंगे. बट जो पुराने वाले ऑलरेडी है यहाँ पे, उनको दिक्कत होने वाली है आपको सेल करने में. एंड इट्स नॉट रॉकेट साइंस. it's a factor that we have to fans accept कि मतलब एग्जैक्टली. डालो के साथ एक चीज है बस, डालो आपका फिट रहेगा लेफ्ट राइट पे. अगर ऐसा नहीं है कि ही कैन नॉट गिव यू वंस इन अ व्हाइल अ गुड गेम. मतलब मैं ऐसा बिल्कुल काउंट आउट
वो काउंट आउट नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई जब लेफ्ट राइट पे दोनों जगह पे खेलने वाला आपका जब उस तरीके का बंदा होता है ना, तो आई एम हैप्पी इन अ वे दैट वो एटलीस्ट फिट रहता है। सो दैट इज डियोगो डालो का ये सीन है, राइट? डियोगो डालो आप, अगर मतलब अगर कंप्लीटली कोई न्यूट्रल आके बोलता है कि हम एज अ फैन बोले कि डियोगो डालो इज नॉट गुड इनफ, कोई न्यूट्रल आके अगर कोई स्टैट का कोई वेबसाइट खोलेगा, राइट, ही विल सी डियोगो डालो के नंबर्स लाइक एवरेज रेटिंग 7.5 7.2 ये रहेंगे, तो उसको लगेगी नहीं डियोगो डालो इज नॉट अ बैड प्लेयर। बट जो वीक इन वीक आउट यूनाइटेड देखता है, राइट, ही नोज दैट ही हैज अ ब्रेन फेड मोमेंट, बॉक्स के अंदर उसकी डिफेंडिंग बहुत ही खराब है, सेट पीसेस में डिफेंडिंग बहुत खराब है, ब्रेन फेड मोमेंट्स के हमें इतनी गोल्स खाई हैं दैट वी हैव एक्चुअली लॉस्ट सम क्रूशियल पॉइंट्स एंड क्रूशियल टाइम पे उसके मिस्टेक्स की वजह से वी हैव लॉस्ट कंट्रोल इन गेम्स एज वेल। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि ही इज नॉट गुड एनफ टू प्ले फॉर यूनाइटेड नेक्स्ट सीजन। आई थिंक वी शुड प्रायोरिटाइज हिज सेल, एंड इस पे ये स्वप्निल का बढ़िया क्वेश्चन है, राइट? I don't know why some people are not happy with Ahmad as a right wing back player. He has scored hat tricks with playing in that position. इसमें आपका क्या सीन है? I think he will work if Mbeumo helps him, right, at right wing back. इस पे आपका क्या कहना है? भाई मुझे एक चीज जो नहीं समझ में आता ना अबाउट अमाद का, उसका क्रेडिट फॉर फिजिकलिटी का। आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट गुड। आप उसको ना हर टीम के अगेंस्ट विंग बैक नहीं खिला सकते, ठीक है? इन सर्टेन गेम्स यू माइट सी अमाद अप फ्रंट एंड एम्बुएमो टेकिंग दैट विंग बैक वाला रोल, क्योंकि वो ज्यादा पेसी है एंड वो ज्यादा फिजिकल है। यू नो, यस हैट्रिक मारी है भाई उसने, बट देन अगेन सामने वाली टीम साउथहैम्पटन थी, यू नो, तो यू कैन नॉट टेक दैट आउट ऑफ द इक्वेशन। इट्स नॉट लाइक कि उसने विंग बैक खेल के यू नो सिटी और लिवरपूल के अगेंस्ट हैट्रिक मार दिया। वो जिस दिन कर देगा ना, उस दिन सारे के सारे शांत हो जाएंगे। बट यू नो, and fair point, उस दिन वो साउथहैम्पटन वाला गेम है, एब्सोल्युटली विविडली रिमेंबर, जैसे ही कमलदिल सुलेमाना गया सब्स्टिट्यूट, तब अमाद खुल गया। एग्जैक्टली, तब तक वो दिखाई नहीं था गेम में भाई। यूरो और अमाद को दोनों को अकेले कुक कर रहा था वो सुलेमाना उस दिन, राइट, इफ यू रिमेंबर। सो आप सही बोल रहे हो। एंड एम्बुएमो और अमाद के ना आप हीट मैप्स देखोगे ना, बाकी बहुत कॉम्प्लीमेंट्री, वो दोनों स्विच करने वाले, मुझे मेरे हिसाब से कोई अंदर आने वाला है अंडर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो दोनों जब स्विच करेंगे ना, वो स्विच करेंगे तो ये और ज्यादा प्रेशर में रहेंगे सामने वाली टीम्स, राइट, किसको मार्क करे, कौन कहां जाएगा, वही चीज बोल रहा हूँ। राइट। थॉट्स ऑन लियोन भाई, एंड ओके इस पे भी बात कर लेते हैं, लाइक डियोगो लियोन कितना इंप्रेस किया? वेरी इंप्रेस, राइट? डिफेंसिवली थोड़ा सा भी सस है, बट आई थिंक इंप्रूव करेगा फिजिकली। विंग बैक्स डिफेंसिवली ससी होते हैं। मैं विंग बैक से ज्यादा डिफेंस की उम्मीद करता भी नहीं। फुल बैक्स तो नहीं है वो, एग्जैक्टली। हां, विंग बैक्स डिफेंसिवली ससी होते हैं, बट फिजिकलिटी से इंप्रेस किया है। व्हेन यू आर जस्ट कमिंग यू नो टू द टीम, और एक बंदा जो थ्रू आउट द एकेडमी आपके साथ ग्रो कर रहा है, हैडी अमास, आप आते के साथ उसको निकलवा देते हो टीम से लोन पे, यू नो, दैट शोज कि भाई द मैनेजर ट्रस्ट यू and you are doing the things that you are expected to do. So I am very happy with Leon, and मुझे लगा था वो शायद फर्स्ट टीम के साथ नहीं होगा, एकेडमी के साथ होगा, but he is going to be a first team player. So let's see what we are going to do. अंजुमन भाई, आप कितना टाइम हो रहे हैं? मैं तो आज अभी स्ट्रीम कर रहा हूं आपका। ठीक है, तो लास्ट चैट few questions, अंजुमन भाई के पास 2 मिनट है। Drop in your questions. I think एक question already था इस पे, right? And let's talk about it, right? And I'll still continue the stream. अगर आप free हो तो बाद में आना, मैं continue कर रहा हूँ stream आज सुबह। मेरा हाँ, क्योंकि कॉल के बाद मुझे नहीं पता कॉल कितनी देर चलेगा। कोई बात नहीं। So who should be a realistic target for that midfield position? मैंने स्टार करके रखा हुआ था। I know बहुत सारे नाम्स हैं, बहुत ये हैं, किसी के साथ भी लिंक्स नहीं है, बट किसके लिए हमें जाना चाहिए from a Premier League POV at this point? एडरसन है ना, यही रियलिस्टिक टारगेट मुझे भी लग रहा है बहुत टाइम। रियलिस्टिक 60 मिलियन का टारगेट अगर है तो यही है, ठीक है? अदरवाइज बलेबा रियलिस्टिक नहीं है। आइडियली एवरीबॉडी वुड लव टू हैव बलेबा, बट बलेबा 100-120 मिलियन का मिलेगा। इनियोस के कच्चे फट जाएंगे, वो बाहर बैठे होंगे कैरिंगटन के, ठीक है? वी माइट बी ड्रीमिंग ऑफ बलेबा, बट वो पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। एंड अभी भी अगर एक ऑप्शन हमारे पास रहता है तो आई थिंक हैकनी अभी भी शायद कंफर्म नहीं हुआ है इप्सविच पे, इफ आई एम नॉट। 15 मिलियन की बिड अगर हमारे को चाहिए होता ना, वो कब का लेके आ चुके होते हम लोग, वो लेके आ चुके होते। वो 20 मिलियन का प्लेयर है, बोलते हैं तुम्हारे को 2 साल में देंगे, और हैकनी तो मतलब यूनाइटेड के बिड आने से पहले कैरिंगटन में खड़ा होता, ठीक है, कि भाई तुम बिड का अपना देख लेना, मेरे को पहले करा लो साइन, पता चले कि बाद में यू नो तुमने ही मना कर दिया, तो वो सबसे पहले मेरा मेडिकल वगैरह ले लो पहले, यू नो, तो ऐसा सीन हो जाता। कोई है नहीं यार, ही इज नॉट मूविंग फ्रॉम चैंपियनशिप टू अ बुंडेसलीगा, और यू नो वो चैंपियनशिप से ही चैंपियनशिप में मूव कर रहा है।
एग्जैक्टली 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 यू नो नो, फेयर फेयर तो फेयर। वही वाली बात है। हाँ हाँ रियलिस्टिक लास्ट आई थिंक कमेंट ले लेते हैं। रेक्स बोल रहे हैं कि हुइलमंड हुइलमंड नहीं आएगा एट दिस पॉइंट आई थिंक। सुलेमान हमसे लिंक ही नहीं है यार। लिंक ही नहीं है। जब लिंक, वही वाली बात है कि जब लिंक तो ऐसे हमसे कोई भी नहीं है, बट रियलिस्टिक हुलमन है नहीं। ठीक है, मार्केट पे वो नहीं उसका है। शायद 50 या 60 मिलियन का क्लॉज है, तो अगर 60 मिलियन हुलमन के देने हैं तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं मैं वॉटमैन 60 के लिए मिलियन में इन्वेस्ट करूंगा रादर। एडरसन, हाँ एडरसन से। एडरसन नहीं, एडरसन को लेके आऊंगा मैं। वो एडरसन ज्यादा सिस्टम प्रूवन इन दैट फॉर्मेशन। हाँ इन दैट फॉर्मेशन ज्यादा प्रूवन है। ठीक है, चैंपियंस लीग खेल चुका, ठीक उस तरीके से आपका टफर लीग में खेलता है, वेयर एग्जैक्टली फिजिकलिटी इज बेटर देन आपका पोर्चुगीज लीग, सो इस वजह से राइट आ राइट राइट जाता राइट। है हुलमन। इट्स नॉट गोना बी अ डाउनग्रेड, बट आप बात नहीं नहीं समझो कि अगर आप डेफिनेटली रियलिस्टिकली कोई बात कर रहे हो तो आई विल गो फॉर समबडी लाइक आपका क्या बोलते हैं एडरसन एडरसन हो देन गया। हुलमन। हाँ हाँ फेयर फेयर फेयर। थैंक यू सो मच भाई अंशुमन भाई आने के लिए। मैं ऑलरेडी अब एंड जो जो चैट मेरे से भी आए हैं, आप ऑब्वियसली यू हैव सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड रोड। अगर नहीं किए हैं, जो भी स्ट्रीम बाद में देखेगा, यू गाइस हैव टू सब्सक्राइब टू अंशुमन भाई द यूनाइटेड रोड। 20K जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल अंशुमन भाई टू थैंक्स अ लॉट। कमिंग इन दिस स्ट्रीम भाई। अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड अप्रिशिएट योर हेल्प भाई। अरे ऑलवेज एंड भाई ऑलवेज, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। डेफिनेटली एंड बाद में हम लोग कभी सीजन लंबा है, विल डेफिनेटली डू लॉट ऑफ स्ट्रीम्स एंड श्योर कनेक्ट। श्योर श्योर भाई, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ, अभी अभी तो तो शुरुआत है, अभी बहुत। तो मैच आने दो बिल्कुल आर्सेनल का। अभी मेरा एग्जैक्टली। विलन आर्क भी खुलेगा, रुको खुल रहा है, सीजन आ रहा है। ठीक चलो है सी यू सी यू सी यू। चलो, सी चलो यू सी यू चैट, नेक्स्ट थैंक यू लेकिन। सो मच, थैंक यू सो मच अंशुमन भाई, थैंक यू सो मच। चलो दैट वाज अंशुमन भाई, फैंटास्टिक सेशन भाई, बहुत कुछ जानने को मिला। एंड ऑब्वियसली 23 जितने भी लोग देख रहे हैं, डू जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक इज पिन्ड इन द चैट। एफपीएल खुल चुका है, बट वी हैड अ फैंटास्टिक सेशन टुडे विद अंशुमन भाई। हम आई एम स्टिल गोना बी स्ट्रीमिंग फॉर मोर देन हाफ एन आवर। अभी सबका चैट्स वी विल बी टेकिंग एट दिस पॉइंट। जितने चैट्स मिस हो गए हैं गाइज, सॉरी, बिकॉज इट वाज अ कोलैब, सो ऑब्वियसली हमको बात करनी पड़ती है ऑन दिस। बट डेफिनेटली जो जो आज चैट मिस हुए हैं, डेफिनेटली आई एम गोना टेक दोस चैट एंड उस पे हम लोग सारी बातें करेंगे। आई थिंक फैंटास्टिक सेशन, अंशुमन ने बहुत का वैलिड पॉइंट्स भी रखे हैं। एंड आई थिंक आई काइंड ऑफ अग्री विद लाइक यस आई हैव टॉक्ड अबाउट। एंड मैं देखो किसी चीज पे अगर इफ आई थिंक कि दैट आई माइट हैव बीन रॉन्ग, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट कि यस मैंने एक सिचुएशन देखी अराउंड जर्गजी एंड ब्रूनो के कैसे वो कैंप फिट हो सकते हैं 3-4-1-2। बट आई थिंक दैट वाज राइटली पॉइंटेड आउट बाय अंशुमन की 3-4-1-2 कभी हुआ ही नहीं है। बट ऑफ द बॉल, आउट ऑफ बॉल पोजीशन क्या हो सकता है, विद द बॉल वी नेवर नो। बट विल सी, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ जर्गजी प्लेज एट दिस पॉइंट। अभी सारा कमेंट्स लेंगे, सारा चैट लेंगे, अभी जिस जिसका कमेंट्स है सब लेंगे अपने पास। आर्सेनल 5 यूनाइटेड 1 फुल टाइम, नहीं ये नहीं होने वाला है। बफी what I'm definitely gonna guarantee you that United तो absolutely will never give like a free hand to Arsenal in that game. At least with the preseason we are having, we'll definitely give a tough fight to Arsenal. ये नहीं होने वाला है at this point in my opinion. But अगर कभी ये स्कोर लाइन होती भी है तो I won't be surprised because Arsenal have done 5-1 to City as well. But I don't think so at Old Trafford ही होने वाला है. Maybe at Emirates, who knows? Notification नहीं आया. So Rex, this is okay, great. Thanks for noting this. 24 people who are watching, right? आपने अगर मेरा सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल नोटिफिकेशन आपने ऑन भी करी है, लेकिन वो क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट इट स्विचेस टू पर्सनलाइज्ड। वंस इट स्विच टू पर्सनलाइज्ड, दिक्कत ये है कि आपको सारी नोटिफिकेशंस नहीं आएगी, आपको ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। इफ यू क्लिक ऑल, देन द होल थिंग एब्सोल्युटली वर्क्स आउट, राइट? ऐश भाई मैंने एडरसन आ गया, हु गोज आउट ऑफ द प्लेइंग 11, उगाते और कैसेमिरो। कैसेमिरो भाई, अभिजय थैंक्स फॉर दिस कमेंट। कैसेमिरो इज गोइंग आउट, इट विल बी एडरसन एंड उगाते, टू एब्सोल्यूट साउथ अमेरिकन यू नो गुदा वाला players I'm talking about. They're gonna really do well in my opinion. um so I think Ederson आएगा तो it's Manu we have to understand, Manu will not start every game. We have to grow Manu slowly. उसकी ग्रोथ हम लोग को हार्नेस करनी पड़ेगी. That's what I think. Prathamesh is here. Thank you so much. Chat miss नहीं. I don't want to miss any chats. अगर any questions you have, you want to chat right now, it's a great time because collab में क्या होता है ना, it's very difficult to take chats. तो अब हम chat सारे लेंगे. So definitely Prathamesh, do drop in your questions, man. Obviously आपका मैं chat कैसे नहीं लूंगा. Ram is saying if Sesko was to come, we will play him or Rasmus. Will it be rotational? Okay,
if Sesko is coming, Ram, right? Sesko is gonna start. It's a no-brainer. Like Hoyland is never gonna start. But it depends. I want that competition to happen. What if Sesko comes and does not work at United? अगर Hoyland from the bench आके goals आपके score कर रहा है, right? It might actually work out, right? So वो भी हो सकता है. There's a clear situation कि I want that healthy competition at United in terms of the forward line. Zirkzee will never be a backup to Hoyland or even a Sesko. Zirkzee will always be a backup to a Bruno or a Cunha or an Mbumo. ये situation होने वाला है. Lucien Agume. I have to still check out this player, man. So I have to really check out this player at this point. So I won't be able to comment. I don't see Isak deal moving forward. नहीं भाई, Isak deal बहुत ही complicated है. You know, if Isak really wanted to leave Newcastle, right, Prathamesh, he should have actually mentioned this right from the start of the season. तब उसको तब rival clubs, Newcastle, Liverpool, they would have got enough time to actually work on this deal, right? अभी सीजन जस्ट मतलब ट्रांसफर विंडो एंड होने आ रहा है. प्री सीजन हैज ऑलरेडी बिगन. टीम्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्लानिंग देयर होल स्ट्रक्चर फॉर द होल ईयर. एंड उस पे आप आके यू आर सेइंग दैट यू नो आई वांट टू लीव द क्लब एंड आई एम नॉट गोना गो इनटू द ट्रेनिंग. वैसे ऑनस्टीन ने बोल दिया कि इज़ाक इज कमिंग बैक टू द ट्रेनिंग बिकॉज यू हैव टू भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट न्यूकासल इज प्लेइंग यूसीएल and फटाफट न्यूकासल इज रेडी to do a bid on Sesko. Newcastle has already submitted their official bid to Sesko as well. So it's going to be interesting, man. It's absolutely going to be interesting. I think Hoyland starts and Sesko off the bench. Okay, if Hoyland has a great preseason, bhai, why not? But if United is signing, going to pay 80 million euros or pounds for Sesko, तो भाई Sesko ही आने वाला है. Sesko ही शुरू start करने वाला है. Okay, thanks Anish. आप hope you have subscribed to the channel. Hope you have liked the stream. I don't know how many likes अभी तक कितने likes आए हैं stream पे, but Krishanu has already mentioned कि अगर जिसको FPL खेलना है, you have to join the Discord server. It's pinned in the chat, right? And prediction competition भी है जिसमें prize है. So if you have to join it, it's only for our Discord folks. And जब membership खुल जाएगी तब I can take it, right? लास्ट लिंक हैवी गोरा से आया था. हैवी गोरा वाला लिंक तो अब नहीं है. इट्स नॉट वैलिड एनीमोर एट दिस पॉइंट. अनिश का एक क्वेश्चन लेंगे. एंजेलो स्टिलर और ह्यूलमन में से एक लगता है. ह्यूलमन ऑलरेडी एमरिम के सिस्टम खेल चुका है. यस ही हैज. प्रोफाइल्स दोनों के बहुत अलग है. अनिश, थैंक्स फॉर दिस कमेंट. एंजेलो स्टिलर प्रोफाइल एंड ह्यूलमन प्रोफाइल इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. एब्सोल्युटली डिफरेंट. ये दोनों प्रोफाइल्स अगर एक मिनट, मुझे एक मैसेज आया है. ये दोनों प्रोफाइल्स अगर साथ में खेले तो इट वर्क्स आउट, राइट? बट इफ you know Angelo Stiller more like a tempo controller. Do we need a tempo controller right now? Maybe in certain situations, but not in this formation. In this formation we need athleticism, press resistance, और turn करके भाग सकता है, carry कर सकता है ball. Stiller is more of like a tempo controller, like cruise mode में. So very different profiles at this point in my opinion, I would say, right? Ketan is here. Thank you so much for joining. What's your realistic position where United would finish at the end of the season? मैं तो बोल रहा हूँ top 8 भाई. I have already said this that it's going to be top 8, right? If we do top 8 this season, coming from 15 and play a good season at home, right, we'll be fine. I think that will be a realistic position where we should be finishing. If we finish higher, absolutely I'll take it. 8th is my realistic. 7th or 8th is my realistic position. He has better stats than Caicedo in data MB. किसके? अगुमे के? हो सकता है भाई, हो सकता है. Top 8 fair, absolutely. Top 8 is the only realistic, bhai. It is the most realistic position we can have. Far better than Chelsea players, sadly. किसकी बात कर रहे हो? अगुमे की? अगुमे की तो I can't say about anything. Ash bhai, if Isak drama is getting stretched too much, I think just move on and get Rodrigo instead. Reports are there that he prefers move to Liverpool and get a centre back backup. Can't waste time on one guy. Absolutely bhai. See, मैंने ये बात बोल रखी है. Like, I know Isak के links बहुत ज़्यादा थे, but if Isak really wanted this deal to happen, वो पहले से शुरू कर लेता. Why start just few weeks before your transfer window began, right? Even if you do, obviously Newcastle will demand way much more than what they could have actually worked out, right? तो वो हुआ नहीं. So, and I see, Prathamesh, I've already said this about Liverpool, right? If Liverpool has to actually really prosper, right, for the whole season,
right? You don't need to sell Darwin Nunes right now. Get a center back. Get Mark Gahey. Start Mark Gahey alongside your Van Dijk, and start maybe sometimes with like Konate as well with Van Dijk. You need to have the rotation in the center back. अगर नहीं करोगे, one injury and Liverpool की defense खुल जाएगी. You already have sold Jarrell Kwanzaa, right? So that would be my POV on this one. But yeah, definitely. Cristiano बोल रहे हैं कि Sunderland have added Lois Openda to their shortlist for summer. See, Leipzig is on a selling spree right now. Leipzig को मिल चुका है कि अगर मुझे 80 million euros from Sesko if I'll get it, right? And then if I get like 40, 30, 35 or 40 million for Openda, that's a fantastic window for them. 120 million, they can actually invest in a lot of Bundesliga players. I think they can get at least 5 or 6 players easily. उनको grow करके they can sell again. Or they can actually get someone from their other clubs like Salzburg or any other leagues from Austrian leagues, right? That's how they work. Leipzig. That's how that has been. And obviously Xavi Simons wala bhi to hai. So Xavi Simons, once that deal is done with Chelsea, right? It's gonna be insane. What a window they have in terms of finances, man. Bye for now. Good point of view. Thanks, Shania, for joining. Really appreciate. Solo stream so it's better. So people who are watching, कल आई एम गोना डू स्ट्रीम जिसमें ट्रांसफर रेटिंग्स हम लोग रेट करेंगे एंड अंकित भाई विल बी इन द हाउस एंड आयुष लाला इज इन द हाउस टुमारो एंड कल वॉच अलोंग भी है सो वॉच अलोंग पे सब आना आई विल बी डूइंग सोलो वॉच अलोंग तो उसमें चैट भी सारा लेंगे बट डेफिनेटली आई डोंट डिसरेस्पेक्ट द क्लब जस्ट बिकॉज ऑफ यू डीजेनरेट्स ओके किस बारे में बात हो रही है भाई भाई अगर आप एडरसन उगाटे को पिवट खिलाते हो तो ब्रूनो खा खिलाओगे ब्रूनो खा मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रूनो आई शुड बी प्लेइंग इन द पिवट नॉट द पिवट he's always better in the R10 or the L10 position. I've said this before. I want that rotation to happen. अगर हम इस सीजन मैं तो बोल रहा हूँ कि we do not need, and Anshuman also mentioned the same point, right? We don't need Bruno to play 90 minutes every game. अगर वो situation है, then our squad is in tatters, भाई. So I think we have to shift that mentality and have to shift that whole mindset of playing Bruno in every game, right? Even if we fail to bring Isak, I'm happy with and proud of my club's management that they have trying to get the best players. You can't get every player you target. You no need to exactly 150, 160 mein you can get good strikers, maybe even a Benjamin Sesko at Liverpool, 80 pe, and then invest 50, 60 आप Mark Gahey पे invest कर सकते हो. You know, you see my POV, like you have to be really, really smart. कि 150, 160 if you're getting for Isak. You know why 150, 160? Because of actually Isak ने जो टाइमिंग करी है ऑफ हिज ट्रांसफर रिक्वेस्ट दैट हैज बीन द होल इशू इन माय ओपिनियन बात उसी पे आ गई अगर वो नहीं होती तो आई थिंक लेट्स से ये डील जून या जुलाई से शुरू हो जाता राइट जून से शुरू हो जाता ऑलरेडी इजैक साइन हो गया होता फॉर लिवरपूल आई थिंक इजैक अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारा है इन माय ओपिनियन Isak is good, no doubt, but he's not Mbappe or Haaland. 150 is too much. 150, see, 150 a valuation does not say what the player is. Isak, if he comes to Liverpool and Isak produces 25 goals season, bhai, Liverpool is winning the league. Straightforward, bhai. Liverpool is winning the Champions League. Player अच्छा है. Let's be absolutely fair. Not Mbappe or Haaland. Fair question. The price always depends on the demand versus supply, in my opinion. Right. Amir Fikre is here. Thank you so much. And Amir Trust. You absolutely trust, bhai. And thank you so much for joining the stream. Hope you have liked and hope you have subscribed to the channel. Hope you have liked the video as well. Amir trust. Absolutely, bhai, we trust. We absolutely trust, and I've been saying this. Like, I know we had a very, very poor season last time, but give that guy 2 or 3 seasons to change things. At least not even win us something, but at least to have a sustainable, football style, stability. That's what I want in this club at this point, and want us to have that fear factor back at Old Trafford. Right. But thanks for the comment, man. Players age के साथ Cam से CDM बनते हैं. We have seen that in the past. Cam says CDM. Yes, I mean, if you're talking about Tony Cruz, right? We have seen that. But with Bruno, it's very different. Bruno में उस mentality है to make that Hollywood pass. Cruz was a much more silky, smooth passer, even when he was playing Cam as well. So player profile समझने की बहुत जरूरत है at this point. Respect Bruno and Casemiro. Absolutely, bhai. Casemiro, ठीक है. I mean, he's already finished. I have already said he's finished. But fair play, bhai. Casemiro has had some fantastic years at Real Madrid. Very good first year at Man United. Some great moments for us. But
it's time we need to let him go. And I think uska contract, I think, will just expire and he will have to leave. Would love to know Jamie Carragher POV after the spending spree Liverpool is going on. Okay. fair. क्या बात कर रहे हो यश भाई? Isak is no longer the best Swedish player in the league. A North London club got one. Oh, fair. That's a fair argument. Gyökeres won the Golden Boot shoe in UEFA Nations Leagues, which means he's performing way better than Isak, at least for the Swedish national team. So that's a fair argument. But you know, quality wise, growth wise, I think Isak has a fantastic growth, at least in that age. But I won't discount Gyökeres yet, because some players peak very late, and Gyökeres has peaked late, but at the right time, right? So I think he has really good amount of years. मैंने उस पे वीडियो भी बनाया, obviously, right? And you have seen that. Gyökeres definitely brings a lot more than Isak in terms of progressive carries as well. Centrally, Arsenal will look much better in the attack. Pressing पे Gyökeres has fantastic numbers, right? Ball उसने बहुत win करी है in the box as well. One of the best in strikers in the Europe for winning duels inside the box and winning balls inside the box, which means you can actually create a lot of control in the top half of the pitch. So definitely fair, absolutely fair enough. Bruno, one of the best and great midfielder in the world right now. Yes, absolutely, bhai. The numbers he has produced over the past 2 or 3 years, 4 years. Consistency dekh lo na. Absolutely massive consistency, bhai. So it's a fair comment. Definitely. That's why I was unhappy when Al Hilal actually bid only 100 million for Bruno. I was like, क्या मजाक कर रहे हो आप लोग? क्या मजाक कर रहे हो? आप, first of all, you are from Saudi. I know you're focusing on a very good salary package for Bruno. But only 100 million for Bruno? Bhai, with all due respect, Bruno deserves more money in my opinion. Gyökeres is better than Isak right now. Definitely बोल सकता है with the numbers Gyökeres has and what he's done for Sweden as well. Definitely, bhai, absolutely. मैं तो बस banter कर रहा. Yes, absolutely fair. And Newcastle is also doing too much because next season no one will pay even 130 what we are paying. 2 years contract बाकी होगा, and I'm pretty sure, damn sure, Barca will come in. Yes, and Lewandowski will be replaced next year, right? And I don't think so Gonzalo Ramos is going to stay at PSG forever, right? And I also see a situation that Real Madrid might actually come in for a Doué or a Barcola in the coming years as well. So Isak to PSG also makes sense if Enrique रहता है. But he will try to demand the same stuff from Isak as well. So yeah, we'll see. This might be Arsenal's years. Definitely. No, I would still say there is one box to tick yet. The left wing position. Martinelli is still not good enough. Bhai. मैं बार बोल चुका हूँ. I think all boxes have been ticked in terms of like central defensive midfield sorted. One of the best midfield in the Premier League right now is Arsenal, right? उसके बाद आप देखो, like have they fixed like the backup wing situation? Madueke, yes. I mean, sometimes he can play left wing, sometimes he can play right wing. I think they still need a Rodrigo, in my opinion. They should go for one. But even if they don't, they're still good for a good season. But I don't think so. Martinelli is that, because Trossard, I think, got injured preseason, if I'm not wrong. So it might happen, bhai. Cool Kev is here. Thank you so much for joining. Hope you have liked the stream. Hope you have subscribed to the channel. Discord server आप join कर लो. If it's pinned, the comment is pinned in the chat, right? So FPL is only for Discord server members, and prediction competition is also for Discord server members. उसमें prize दूंगा to the folks who win. So definitely do join. We need Baliba in the midfield more than we need a striker. I've said this before, right? And if Sesko says that no, I'm going to Newcastle, we should absolutely use our budget to go for a good midfielder and a goalkeeper. Yeah, this is something that I'm not saying today. I've been saying this hundreds and thousands of times, in my opinion. Right? I've already said this a lot. So Baliba, but we'll not get it this season. By if we go for Baliba right now, he's going to cost us 120 million. Baliba, we have to plan. Baliba, we have to plan for next season. Planning कैसी होगी? January से we have to start the negotiation and discussions that yes, we are interested in this player. तभी we can drag on and absolutely come to a right price. I do not want to pay 120 million right now for Baliba, in my opinion. Not better than Isak. He can much more qualities without his goal scoring.
Yes, I mean Isak from a player quality standpoint better, but Gyökeres in terms of the form right now is just insane by his time pe. Football modern style and system. Amorim, yes, you seem to be like a Amorim fanboy, which is fantastic. Bhai, we have to back our manager. We have to back our manager. Baliba is fire, absolutely. Bhai. Baliba is the most impressive upcoming midfielder, but we have to see one more season. Fit bhi rahe. Let's see one more season. Let's trust his fitness a bit more. Agar wo fit raha, right, this season also performs really, really well. I think we should start the talks right from January, in my opinion. Right now that midfield is in the question, right? Martinelli is good as me. Yeah, fair enough. Fair enough. Bhai. If not, Isak, get Watkins and Rodrigo around 90, great deal. I want us to go if agar striker hi chahiye to United ko, like for somehow like they want a striker no matter what. They should actually go and get Watkins by 50 60 millions mein aa jayega. 3 good years value nikal jayegi, will help us get reach our objectives. Will Arsenal go for Watkins? No, they should not be, right? I think they should go for Rodrigo at this point. Arsenal. That's what I think. जय मां समले, यस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग भाई. जो लाइक नहीं की स्ट्रीम, आई डोंट नो हाउ मेनी लाइक्स, कितने हो चुके हैं लाइक्स इस टाइम पे. देखो भाई 38 लाइक्स हुआ है अभी तक, राइट? 38 लाइक्स हो गए, 50 पहुंचा दो. पीपल हु आर जॉइनिंग, आई एम स्टिल गोना बी देयर फॉर मोर 30 मिनट्स इन दिस स्ट्रीम. सारी चैट्स लेंगे, सब बात करेंगे, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट द मिडफील्ड एज वेल. इज दिस मिडफील्ड गुड एनफ? आई नो अंशुमन के साथ बात हुई, बट ही हैड टू लीव, बट आई एम देयर टू टेक ऑल द चैट्स आज. Keep an eye on Chelsea. Got Hato for Cuckoo backup. Abhi Xavi Simons bhi aa raha hai. Yes, and Xavi Simons bhi aa raha hai, and I want them to bid for Garnacho and just want Garnacho to get the hell out of my club at this point, right? But we'll see what happens with Chelsea. But definitely Chelsea is there, right? Like coming from that Club World Cup, right? Seeing Maresca football absolutely in full flow in that back three position. But Hato is a good signing. I don't doubt this. But in my opinion, they should have actually gone for a more marquee centre back, right? Why did not they go for a Konate bid, let's say? Why did not they go for a Marquinhos bid? Marquinhos has achieved his PSG thing by winning the Champions League. That would have been a fantastic. That's where I'm saying in terms of ambition, right? Hello. Yes. I know you were there. I know you are dreaming Wharton. I have been dreaming Wharton since long. Um, from a player profile perspective, right? Injuries है उसमें. From a player profile perspective, I have seen him play and I'm absolutely in love with the player. But the thing is that right now with Crystal Palace, we are already too late to make a bid, in my opinion. ऐसी signings ना, we have to plan. You cannot just turn up कि नहीं, we have to sign Wharton, आज मैं पैसा फेंकने वाला हूँ. We don't have even the money to actually go all out for Wharton and Baliba at this point, right? There's another player like Baliba, Dan Neil from Sunderland, 22 years old. Wow, fantastic. Bhai, Dhruv ke comments, I love him because he brings some underrated players in the chat, which is fantastic, bhai. Which is fantastic. Enciso is one of the watch to this season. He has got the number 10 position. Yes, Enciso, I was very impressed when he was playing at Brighton. Will be interesting to see how he does this season as well. But what a fantastic player though. I like Enciso. Ash bhai, Sesko से अच्छी डील होगी Watkins. Agree. शुरुआत से बोल रहा हूँ, like from numbers, like if he signs Sesko right now, वो 2-3 साल लगेंगे उसको वर्ल्ड क्लास बनने में at United. Sesko अगर आर्सेनल ज्वाइन करती, हम अगले साल ही उसके वर्ल्ड क्लास नंबर्स देखने लगते. Watkins already has the Premier League experience, and already this year INEOS and even Amorim said the same thing, that this season I realized that we have to go for more Premier League proven experienced players. इसीलिए that वो Cunha and Mbeumo came, right? Cunha and Mbeumo came because of the Premier League experience. With Watkins, right? These three guys know how to batter the Premier League defenders, right? ये sure shot signings है. If we get Watkins, right, that trio is going to work for sure. ये rivals जानते हैं, ये neutrals भी जानते हैं. Let me what do you think? But with Sesko, it still can be a gamble because it's a new league. He needs to adapt to the Premier League. Physicality जरूर है, aerial threat जरूर है, but does he really know the Premier League enough to actually start firing right away? That has been my point of view on this one. That has been my POV. Marquinhos won't get the salary. I agree. No, he might actually. At Chelsea, he might. If in Chelsea, he might. I don't know how much Marquinhos is actually earning right now in PSG.
But I think the same situation Donnarumma is trying to do is get a better salary at PSG. That's why he's trying to force the move away as well. So, but that's what ambition I'm talking about. Rather than Hato, in my opinion, they should have, or even go for a Xavi Simons. In my opinion, they should have actually went all in for a Marquinhos, because if they get a good centre back, right, Chelsea are winning something this season. That's my POV, bhai. With Wharton, you have to play Ugarte and not. Absolutely agree, bhai. Absolutely agree. If we are signing Wharton, it's going to be Ugarte on the pivot, right? Else Bruno is going to be run down. And this is where I want that whole rotation to come up in the forward line. I want competition in the forward line if we sign a good central defensive midfielder. Why is no one looking at Strand Larsen? Any specific reason? He's good, but I think people need to understand that Strand Larsen already signed another deal extension at Wolves for obvious reasons, right? Because Wolves expected कि कोई bids आ सकती है to Strand Larsen. No one is going for him. Surprising. I was expecting at least the likes of Brentford to go for Strand Larsen, right? Considering Mbomo is gone, Wisa is gone. Even let's say like a Wolves or even an Everton, right? Like with Beto is not their real prime center forward, right? So they should have gone actually for a Strand Larsen. DCL they have already sold. Um, Interesting, very good player. Again, from a United POV, no. I know his link up is pretty good with Cunha, but from a player POV, he's pretty good actually. We linked with Giovanni Leone as center back for Parma. Okay, I have to check him, bhai. I have to check him. Vishal is here. Thank you so much, bhai. Vishal, hope you have liked the stream as well. Bhai, if you want to participate FPL, I know we play an FPL. हमारे घर वाले previous home वाले, but if you want to play FPL, join the Discord server, bhai. I'm having a prize money at the end of the year, so definitely join करो वहाँ पे. I love to have you here. What is the prediction on number of goals United will score this season? Great question. Great question. Great question. So I have said this before, right? United scored only 44 goals in the last season, right? Cunha and Mbuemo coming back from 35 goals in this season, last season. Watkins, if we get right, then I'm talking easily 70 goals plus. But even if we don't get, and if we get a good midfielder, I still have trust in Højlund to perform decently. So I'm my realistic expectation that we need to cross the 70 goal mark. If we cross the 70 goal mark, we are looking at a top 8 finish. And chat, let me know what you think. This has been my POV right from the start. I think this has been one of the main differences why we did not turn up on some of the games. But that's the thing. It will be very interesting to see how we break down low block defenses. That'll be tough. Thanks for the comment though. But Ashby, the injury problem cannot be ignored now. Is he fit enough? Wharton could be good, but he will stay fit, bhai. He will stay. He had just one injury stint. I'll check it right away, right? Okay. Wharton injury history. ठीक है, मैं अभी जाके दिखाता हूँ आपको. ठीक है, Wharton की injury history क्या रही है, right? See, Wharton has only missed. So okay, 2024-25 season में he's just only missed 7 days with one ankle injury. 24-25 एक 18 games he has missed I think this season. एक groin surgery हुई है. उसके पहले he did not have any injury concerns. But fair enough. I think once the surgery is done, right, I think the things will be much better, because once your groin is fixed, you should be better position, in my opinion. But वही मैं बोल रहा हूँ. I think if we have to get really Wharton or Baliba, we have to plan it for next season. I think this season we should be going for Ederson. Ederson can play that LCM, RCM both, right? We need more options. We need a squad of 18 players. That is a fair comment though. What if Watkins goes downhill and back-to-back season high? It's not that the same technical demon. I understand, but Watkins has proven every season, bhai. Watkins still looks the billing even at this age because of what he brings. Runs अच्छे बनाता है, finishing उसकी top tier है. If you haven't read the article on Athletic, go do check out. उसमें बताया कि कैसे player evolve हुआ है. I think Unai Emery has changed Watkins a lot last 2 seasons में. His game has improved massively. He has evolved, and players peak at the certain age. Maybe this is the age that Watkins is peaking right now. It is tiring to see all these transfer rumors every day. Slytherin forever. Thank you so much for the comment. I understand. I absolutely resonate with the statement. Like, I'm tired right now, honestly. Like, Sesko. I think United were looking forward to Sesko. I was looking forward to Sesko as well, even if I did not want him initially. But obviously, I've said this. I'll welcome him with wide hands, right? Wide arms. But yeah, it is what it is. And
And Romano कल बोला है कि we are linked to a midfielder. भाई midfielder there's no, Anshuman mentioned the same thing, right? We don't have a concrete link with any midfielder rather than Ederson. So in my opinion, if midfielder option dekh rahi hai after the whole Sesko situation, I think United might actually go for Ederson. Enciso is going to Roma, right? Or is he staying? I'm not sure, bhai. I think he might leave, right? Because but if he stays at Brighton, he's gonna work really, really well. Our focus should be on mids complementing Mainoo and Ugarte rather than replacing them. Absolutely, bhai. Absolutely, bhai. We cannot start Mainoo, Ugarte every game. If they get injured, right? We cannot do that. We need to have that. We need someone experienced to at least help Mainoo. I've been saying this a lot. अगर एक एक्सपीरियंस मिडफील्डर आया ना, मेनू का ग्रोथ विल बी एक्सपोनेंशियल बिकॉज he'll stay fit. He the manager knows how to manage Menu, in my opinion. Bye Ash bhai, kal milte hain. Absolutely bhai. Thank you so much for staying. Thank you so much for staying. Strand Larson was on loan last year from Celta Vigo and Wolves signed him for this season, so not possible. Exactly. Sign कर लिया ना, long term 5-year deal पे sign किए Strand Larson ने. It was a loan deal. Yes, correct. But his link up with Cunha was very, very good. So no one will go. Even from a Celta Vigo standpoint, no La Liga or club also went for it. I think Wolves were very impressed with how Strand Larson played. So definitely they had to sign him. He was very good for Wolves, in my opinion. This management ain't budging with that bullshit for fee structure limitation. There's a reason why Chelsea is not signing players with high salary. Fair, 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 fair. Absolutely fair. Yes, Cunha and Mbeumo easily 20 goals and assists each if stayed injury free. Yes, yes. And these guys don't get injured enough. Fingers crossed, Mbeumo has been consistently playing for the last 2 seasons because he works on his fitness a lot. Same for Cunha as well. Guile hai usme na, he knows when to run, when not to run. People have this argument that Cunha is one of those players who has walked a lot. He's not walking, he's reading the game, right? He needs to understand that Cunha has a pressing game as well. We saw that in the preseason as well. But yeah, fair enough. The best midfield will be Ederson this season, and next season sell Bruno and Baliba next year with Ugarte and Kone as their backup. Bulldog midfield and Mainoo is number 10. Mainoo actually works as a number 10 in my opinion. Like sometimes he can actually play in that position. He has played that last season as well. 3-4 assists bhi the uske. Some goals as well in that 10 position as well. He can support there when needed. It all depends on the opposition, right? कौन सी opposition खेल रही है सामने, and then we have to plan whether we have to put Mainoo up top or not. But fair comment. Absolutely fair. It's easy to think that Cunha and Mbeumo will provide 20 goals and assists this season, but it's also important to think that they have got the numbers as the only goals and assist providers in the previous team. Good point. That's a great point. But what they bring definitely is that they have the mentality to turn up in those games. That's what those numbers say. That's what those numbers bring for them. If these two players not, so I'll give you context, right? Mbeumo not only scored those numbers, right? He also helped Johan Visa score 20 goals as well. So it's not like part of individual numbers. He's also helping the squad, other people to improve. Like, I'll tell you a reason why Strand Larson and chat up batao if you agree with this statement. Why Strand Larson's loan move to Wolves was a success? Because of Matheus Cunha. Matheus Cunha built that partnership with Strand Larson, तभी वो काम किया. Mbeumo and Visa actually struck that partnership, तभी आपको 40 goals देखने को मिले. Even Kevin Schade and Mikel Damsgaard absolutely linked up so well with Mbeumo कि their numbers were also very good. So numbers aside, I think they bring that mentality and that IQ in that squad. That's why I think Amorim went with those signings. I think it was a clear POV. But thanks for the comment. That's a fantastic comment, by the way, Vishal. Appreciate it. Nevertheless, it'll be interesting to see what Amorim does with them. It'll all depend, bhai, on the preseason, in my opinion. If the preseason is good, right? If we do the preseason right, we will actually see a better performance against Arsenal in the first game week. And I won't be surprised if we go and beat them. We'll be doing a watch along, guys. Sab aa jana us din. KV will be here in the with me for the watch along. So definitely we'll talk about it. Arnav is here. Thank you so much, bhai. Thank you so much for joining. I hope you have liked the stream. I don't know how many likes. अगर 50 नहीं हुए तो 50 like कर दो. I'll really appreciate. अगर 50 likes अगर नहीं हुए हैं तो भाई मैं क्या बोलूं, 50 likes कर दो. 592 subscribers हो गए guys. 8 more subscribers to go for 600 if new people are joining in. We will reach 600 subscribers for only 8 subs remaining if we do this, right? मजा आ जाएगा. Live last time 500 क्रॉस किए थे. इस बार भी अगर 600 क्रॉस कर लिया तो it'll be absolutely fun, भाई. Yes, 22 people watching, guys. Like kar do stream. If you like the stream, it'll do me a great good.
तो ऑलरेडी 42 लाइक्स हो चुके हैं, 8 more likes to go for 50. Thank you so much. Discord server is pinned in the chat. Do join it. People who have not turned YouTube notification, I was checking YouTube Studio Analytics, right? आप सब्सक्राइब तो किए हो, नोटिफिकेशन ऑन जरूर किए हो, लेकिन पर्सनलाइज पे है. गो एंड सिलेक्ट ऑल राइट नाउ इफ यू आर वाचिंग, अगर आप कोई भी मेरी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो. Both Premier League proven, absolutely Premier. That was the POV, Arnav. That was the POV that why we tried to sign Mbomo and Cunha. That was Amarim's POV. Amarim realized that he needs more Premier League proven players because it's a different gravy. Bhai. Playing in the Premier League is a different gravy. It's a different league altogether. Even if we sign Sesko, we should get rid of Hoyland. Agar Sesko sign kiya, to we have to get rid of Hoyland. But I want to see more of Hoyland. I want to see that competition brewing up, in my opinion. But yeah. Javi Guerra from Valencia would be great. I have said this, but I like Javi Guerra. Okay, very young, athletic. Spain se aa raha, to technically very good. It's a given, bhai. It's a given technically from a ball playing POV. Absolutely fits the billing, bhai. Absolutely fits the billing, and Javi Guerra will work. Still, you guys need a striker at this point. I think Watkins. Yes. If United does not go for that bid, right? If United does not go for that bid, let's say Sesko tells his decision that okay, I want to stay at Newcastle. The next, I know Watkins ka deal off hai, will and I think Aston Villa has informed United that Watkins is not for sale. So if United still goes for that sale, it will cost us 60 to 65 million euros. That's why I want us to invest in a good midfielder like Ederson and a goalkeeper in Lenny Salmons and Senna Lamens, and I'll be very, very happy with this transfer window. Because agar we do the smart thing and not go and hit the bandwagon of signing a striker, if we get a midfielder goalkeeper, we'll actually fix some of our core fundamental issues enough. That's what I say. Yes, please take as many points away from Arsenal, lol. Yes, Vishal, to aap to hi bologe ye, for sure. Mystique is here, bhai. Mystique, I didn't see you today. Anshuman was here, but Anshuman stayed for 1 hour. But I'm taking chats right now. We'll talk about it. Was on Daksh stream. Yes. Daksh bhai ko bolo, bhai. Daksh ko bolo. He'll do a collab with me soon. 30 people are watching, guys. Like kar do stream so that it reaches 50 likes or more. And last watch along pe kya viewing aayi thi, bhai. The last watch along gave me 2.3k views, bhai. It was fantastic, bhai. The support, fantastic. And I always say this, right? I have one of the best chats, like just chat aati hai na mere channel pe. It's one of the best in my opinion. Like bahut, and they actually help me learn. I don't want to be right. Like I don't know everything, right? I want to learn from you guys. Like aaj Anshuman ke stream pe bhi, like when he countered my point, and I was like, yes, fair enough. That's how football discourse should, bhai. I should not get offended by anything that you guys also disagree with me as well. Aap disagree karo. I would like to actually talk about it. But thank you so much, Mystic, for the comment. Only 2 preseason game left. Exactly, bhai. If you have to really plan a holistic rebuild, right, with squads, मैं हमेशा बोलता हूँ, like if like people want Wharton Baliba, start, don't, if you don't get him now, that's fine. Start planning from January. If you start planning from January, right, tab you will be able to seal those deals by May or June before the start of the preseason. Preseason, once you integrate your players, you're in a much better position to go into the league. Like Words already is integrated into the squad in Liverpool. आप देखो, criticism aside, you will see a different floor in Words for Liverpool this season. Pramodini बोल रहे हैं कि one more thing is Cunha and Mbumo overperformed their XGs. Yes, I have mentioned in these videos. I have mentioned in the Mbumo video, अगर आप लोगों ने check नहीं किया, Cunha and Mbumo were the 2 top overperformers in XG in the Premier League. By country mile, bhai, they overperformed their XGs by 7 goals or 6 goals. Insane numbers, bhai, because of the IQ and because of the directness they provide. Fantastic comment, bhai. Thank you so much. 600 subscribers in United, signing number 6 in midfield. 600, bhai, agar, thank you so much for the comment. Kitne subscribers हुए, I don't know. Agar, I think we are like hardly 8 subscribers or 6 subscribers to go for 600. अगर हो गए तो मजा आ जाए live stream पे. It'll be fantastic, bhai. What's your feel on Sesko now? Where is he heading? It all depends on him and his agent, bhai. I know kal links aaye the with Sasha, with that journalist. I don't trust him. He has been absolutely wrong on all news United, and also for the words wala news, he was bad as well, right?
He's not he cannot be trusted. I know Newcastle submitted a bid. We should not panic. Newcastle did submit a bid. It all depends on whether Sesko and his agent tell that okay, bid आइए Newcastle से, but they haven't sorted out the Isak situation either. So Sesko, if he tells that oh no matter what I'm going to choose United, then United will go for the bid, right? Else United will not waste any time. Anshuman has mentioned this as well, and I have the similar thoughts as well. If Sesko says yes today that no matter what, I'm going to join the Amorim project, United is going to go with a bid, and that bid will not be even 80 million euros. That bid will be 70 plus 5 or even a 65 plus 5. I think 75 will be the bid that Sesko will go. United will go as well. Kal ka match, yes, so by so jao because I'm going to do a watch along for that game as well. So last watch along पे fantastic viewing भाई, ऐसे watch alongs पे आया करो, we'll have a lot of fun, chats भी लेंगे, match भी देखेंगे. Yes, I'm going to do a watch along भाई for tomorrow. So definitely do join in. Hayden Hackney, okay, new news, right? Hayden Hackney has rejected the chance to join Ipswich Town after talks with Suffolk Club. Midfield is now on bench for the friendly against Deportivo. Okay. That is interesting. Will Hackney, but he's not linked with us, bhai. He's there in the names as admirers, but never direct links are here. But who knows if United is smart enough, they can actually do it. Yes, Embumo video bhi hai. Link is in the chat. Cunha video has already crossed 5,000 views on YouTube, bhai. आप लोग जाके देख लो, it'll be fun. It's Wilcox's plan of signing Premier League proven. Yes, Jason Wilcox is a great point. Hi, Abhijit. Great point. I like this one. That's a fantastic point. Wilcox, and also from a Vivel standpoint, I think Vivel right now is also understanding the Premier League a lot better, right? That he says that yes, let's focus on those players who are actually performing the best for each of their clubs, even if they finished low in the league, right? Fair point. Fair point, bhai. Fair point. Amorim is taking everything that is given to him, right? And he has already mentioned that he might actually take everyone that if let's say Garnacho aa gaya. I think, and let me know chat what you think. If we are not able to sell Anthony, right, I think he will be able to accept Anthony as a better option. And actually, Anthony might work as one of the backups for Ahmad. And I have a stat for this. And last season ka stat hai, when Amorim came in, Anthony and Ahmad played together, right? They scored 10 goals together. They were involved in 10 goals, while Dallo and Mazraoui were not. So I would rather have Anthony back in the squad rather than Garnacho. And that's what it is, man. I said multiple times I see Pepelu suit currently more than Javi Guerra. Okay. Yeah, Pepelu is a good option. Javi Guerra from a athletic standpoint, maybe. What do you think? You see the La Liga much more better than me. This season I'm going to watch La Liga even more. So बहुत सारे players पे बात करेंगे. ठीक है, बोल दो क्या मॉड. अरे गो फॉर इट भाई. थैंक यू मिस्टिक फॉर दिस. बोल दो भाई. दक्ष आ जाएगा चैनल में तो मजा आ जाए. आई थिंक we have दक्ष और मैंने बात करी इस बारे में. आई थिंक दक्ष was busy during that time, but see Daksh will come to the channel. आएगा वो. He definitely will come soon. Maybe after I hit 1K. Why not signing a Premier League proven keeper? I mean, City centre back. Okay, backup keeper. Forgetting the name. Okay. Are looking to sell him and available for 20. Not elite on ball, but it's not needed. City ka backup. Okay, you mean Ortega? Ortega is a very good keeper, by the way. Hey, great pointer, but we won't be signing from City. That's the whole thing. City United signings they don't happen like unless the player forces it. So it's not gonna happen, bhai. Jersey पे Premier League badge कैसे लिया? ये jersey पे Premier League badge, bro, it's customized. This is a Ronaldo jersey, भाई. This is a Ronaldo jersey. ये देखो. जब Ronaldo आया था, I had bought this jersey, right? No, it was not an official United jersey. मैंने football frenzy पे I had bought this. What's the point you disagreed? अरे I disagreed on that formation thing. ये अंशुमन के साथ. Yes. It's not disagreement. It's like it's a fair point, right? कि yes, with the current crop of players, we might play on a certain formation. But I said that we might actually do a 3-4-1-2 in some games, but he disagreed on that because he said that's a valid point because 120, 130 games, Amorim never played that formation or never changed it. Now, will he adapt to the Premier League needs? We'll see, bhai. But it's like a theoretical concept hai, jab wo ho sakta hai with the player profiles we have.
I have a different POV. Either sign now or next summer. In a winter, 30 million worth player will cost 45 million, which United may not afford. By the money, same quality. I have said this by the same thing I've said for Hayden Hackney as well. Right? If we buy today for 15 or 20 million, his uske value to ऊपर जाने ही वाली है. For me, it's not Sesko. I want to go for either Strand Larsen or Visa. Ab bhai, mistake. Now you have changed your opinion, huh? Now you have changed your opinion on Sesko. You are the one. You're the one last stream. You are going all out on Sesko. Now you see what I'm talking about. 80 million is very. It's a risky deal from a United POV. 80 million पे दो player आ सकते हैं अपने. That's what I'm saying. We have to fix other issues, but fair enough. Watkins, so Watkins मेरे हिसाब से Watkins forces the deals, right? 55-60 में आ सकता है, but will we go for it? We'll see, man. Sesko अगर नहीं आना चाहता तो लमीन कमारा के लिए जाना चाहिए. He is not that tall, but more of a Kante mold. Yes, Lamin Kamara is also very highly rated in the midfield. See, now people are realizing, right? When I've been talking, right, कि midfield अपने को चाहिए भाई. We had to prioritize. Midfielder जब आता है ना, good midfielder, your squad stability is good. You will see those Hoyland का numbers last season वाले 16-17 goals वाले, right? With the right support, right, L10s and R10s don't need to drop by higher on the pitch ना wing backs खेलेंगे बहुत अच्छे से अगर midfield sort कर लिए तो. ये बात तो अंशुमन नहीं बोली है. Check Keith Downey to know about Hackney. Okay, definitely I'll do that. I'll definitely do that. If you want an agent, please sign Gyökeres agent, not Sesko one. एक agent ने अपना commission. Fair point, bhai. Gyökeres ka agent. I don't know what Arsenal convinced Gyökeres, but the agent did not like cut his fees and everything to make this deal happen. That's an agent you want as a player, in my opinion, right? Matlab passion, bhai. First, football should be your primary goal, in my opinion. And fair play to Gyökeres, bhai, for choosing Arsenal. Arsenal is a fantastic club to join right now, in my opinion. Fantastic club. I'm envious of Arsenal right now. That's how I would say. Man United will submit an offer for Benjamin Sesko if the yes and एक घंटे पहले इसी चीज पे बात करी थी. 28 people watching, guys. Like कर दो stream. 50 likes के ऊपर हो जाने चाहिए. I don't know how many subscribers we are on right now. अगर live अपन पहुंच गए 600 subscribers, it will be absolutely fantastic, भाई. We are on 591 subscribers. 9 more to go for 600. Let's go, bhai. And we have said that we talked about this in the stream, right? That if Benjamin Sesko gives an agreement to join United, then United will put an offer. Else it's absolutely a waste of time to do it. I'll take, yes, agree, bhai. I absolutely wholeheartedly agree. I'll take Anthony, but no for Sancho. Yeah, absolutely. Absolutely. I'll take Anthony any day, bhai. Foot versus yes, thank you so much for joining the stream. Hope you have liked the stream. Hope you have subscribed to the channel as well. Can you tell me what do these people like Wilcox, Omar Berrada, and Vivel like? What are they for? They are right. They are trying to transform. Like Omar Berrada is like this, like the CEO. Wilcox is sporting director. Vivel is your scouting department ka director, where he has a team of scouts actually looking elsewhere. I think Vivel say that shift has come in terms of the young players we are signing right now. Sekou Kone was found out by Vivel. Vivel is actually trying to make this Sesko deal happen because of his connection with Red Bull as well before. Because he was the one who actually found out Benjamin Sesko. Let's be absolutely okay. एक चीज clear करो. I think, and keep you on. That's what I have read. Vivel was the one who scouted Benjamin Sesko for RB Salzburg, right? So he knows he has that connection. If Sesko today says no, yes, then definitely United will make anything to make this deal happen. The only exactly, bhai. I think there's a unanimous agreement on all United fans that at least अगर कोई situation है that we are not able to sell Anthony, he'll be the only player that we would gladly accept back because he might work out bhai, with that trio of Mbumo and Ahmad and Anthony, bhai. Who knows? Yes. He loves to collab at the time. I definitely, bhai. बात हुई है हमारी. We have talked about it, bhai. Daksh से बात हुई है. Daksh is definitely coming, and I want to give him a fair chance to come. And season लंबा है, bhai. We'll talk about a lot of things, bhai. I think the thing is definitely. I think a lot of the bigger creators right now, at least, definitely have seen my content and they appreciate my content. So मेरे लिए उतना बहुत बड़ी बात है. That's a big, like, getting the validation from experienced creators for some of my videos and streams is the thing I want in the initial years of my channel. ताकि एक है कि हाँ, this guy is doing something right.
definitely for the football community. वही मैं करना चाहता हूँ भाई. And I like football discourses. I do not get rattled easily in terms of football discourse. I want good football discourse. Like I want to learn, bhai. I want to like Zishan. I also really appreciate what he does in his channel as well. So होने वाला है. A lot of bigger collabs are coming this season, guys. मैं reveal नहीं करूंगा. बहुत बड़ा collab आएगा, right? But your guys reaching somewhere. मैं बताऊंगा नहीं. It will happen. I'm telling after Wilcox takeover, we have changed our direction of signings. Before that, we were going for it was going to be youth project. There were a lot of reports regarding that. Fair. But I have to admit, I want Anthony. Yes, absolutely, bhai. Pepelo has both Segunda and La Liga experience, and one Pepelo is there. He can play with Bruno and double pivot because he has the ball-winning ability. Okay, bhai, can you send me some compilations? I haven't checked him, bhai. This season, I'm gonna check La Liga even more, right? So do send me Discord pe. I'll definitely do check him out, and we'll talk about it, bhai. Discord pe we'll talk about it. Anthony Garnacho to stay. Garnacho nahi bhai. Garnacho first of all does not even fit in this formation. If Garnacho plays, right, we have seen him being very selfish. In this formation, you have to be selfless as a player. You have to work as a team in this formation. Every player has a responsibility. If Garnacho goes that I'm the main character guy in this formation, it's never going to work. I want Garnacho gone because of what has happened over the last 6 months. Anthony rather has proven himself in his loan deal. So I would welcome him with open arms, in my opinion. My here out signing was Alex Baina. Fantastic signing. He went to Atletico. Fantastic signing. Versatile. Alex Baina, bhai, game changer signing for Atletico Madrid. Absolutely insane. I mean, you can approach and City won't block the offer if you match valuation. Obviously, every player has a price. I've always said this. No, I'm still in for Sesko. I said if it's not Sesko. Okay, fair. Hi, 80 million player, 2 million, Disasi and Jackson. Yes, it's... Thanks for the comment. Disasi to definitely not. Jackson is a good player. Okay, Disasi मैं नहीं जाऊंगा. Jackson is a good player. I like Jackson. Okay. Orbit is here. Thank you so much. Thank you so much for joining. Thank you so much. राइस को देनी कर दिया था कमारा ने फ्रेंडली में. Yes. एंड मैंने अंकित भाई के साथ स्ट्रीम करी थी एक. उसमें उन्होंने एक्चुअली एक पॉइंट किया था कि हैकनी आल्सो हैड was rolling Chelsea up and down in that two-legged tie. Middlesbrough Chelsea वाला भी. These are good players. Smart signings करने पड़ेंगे हमको. Players are there in the market. We have to identify them. कैसे? I'm good, भाई. I'm really good. Thank you so much. It's early morning. It's 10:18 a.m. in Montreal. सुबह उठ के stream थी आज because Anshuman was available at 6. Yes. I've sent you the website I use for scouting on Discord. Thank you so much, Dhruv. Thank you. This is going to help me in my videos as well. I really appreciate your help. Bhai, thank you so much. I always tell that chat is fantastic. Bhai. यहाँ पे जो chat आती है ना, it's very good. I love the chat here. Gyökeres agent is not a great agent. He's also the agent of Frankie de Jong, and he sold Frankie de Jong for the cost. He was sold to Barca. Ajax did not want to. Maybe he has improved. He has changed his stance. I mean, from a money standpoint, maybe not. Right? Maybe उस situation अलग थी कि ask for percentage of the sale, but with Gyökeres, he had to force the move because of all the toxicity that was going around, right? Now he's 90% taking that commission under the table. Okay, fair. If I am Sesko, I will choose Newcastle or United. Why to sign for not so stable club but not a team? I agree. If Newcastle sells Isak, right, I won't be surprised if Sesko goes and chooses Newcastle because Newcastle will play UCL. Newcastle has a playing style that actually might suit Sesko. With Elanga and Sesko can actually form a partnership. Very direct players, right? Fair point, bhai. I've said this before. If we back Vivel and everything works out 10 years later, he'll be one of our main pillar if we rise back again. Absolutely, bhai. Vivel has to be back. Vivel is the most highly regarded scout managers in the whole world. And he worked with Chelsea during that period. Tabhi Chelsea could sign a lot of these young players, right? And they're able to sell them later as well. But I don't think so. We'll follow the Chelsea model, but at least Vivel will help us in scouting. Check what he did in FDJ case. You will understand the guy. He ain't Mr. Goody to shoes at all. Okay, fair. After the stream, sure. Yes. Will not become risky for us if we get Sesko. I know Sesko has a higher ceiling than Rasmus, but I still fear of this deal. What if it turns like Rasmus 2 point? There's always that gamble, bhai. And thanks for this comment.
there's always this gamble with any player that joins United, because playing for United needs different liver, kidney, heart, right? So we have to understand that it's not easy to spearhead the lineup of Man United, right? Most strikers that have come, I think Cavani and Ibrahimovic with their mentality, and Ronaldo actually did really well because of where they come from, right? Sesko is still not a project player, I would say, but he has got the tools to do it. अगर यूनाइटेड के पास वो आर्सेनल जैसी स्क्वाड होती, राइट, at this point, then Sesko is a sure shot winner, भाई. I've said this before to Arsenal fans as well. If Arsenal would have signed Sesko, it's a sure shot winner for them. As I've said the same for Gyökeres as well. Gyökeres is going to do really well at Arsenal. Only good thing about Newcastle bid is now the deal will fast forward. Yes, yes, and जैसी official bid आ गई, and let's say Leipzig accepts that deal, right? Now it's up to Sesko if it accepts the player move or not. Sesko अगर बोल देती है कि no, I want to join United, things will change, भाई. What a transfer window it has been, भाई. आप मेरे को बताओ, how did you feel about the transfer window, because it has been cooking like hell. Absolutely, भाई. Not only in this, every formation Garnacho selfie. Yeah. Garnacho, like, and I've set this example, right? If you remember the Champions League final, Desiree Douy made that pass to Hakimi. Garnacho होता तो शॉट लेता एंड वो सेव हो जाती वो शॉट. तो डिफरेंस इन आईक्यू तो डेफिनेटली है भाई. I personally think that Renato Vega will be good in a back three and a back two. Renato Vega is a good player, man. जैक्सन का जितना इशू है वो यूनाइटेड में नहीं चाहिए भाई. इतना रेड कार्ड. या आई मीन जैक्सन इज अ गुड प्लेयर. आई वांट माय प्रायोरिटी लिस्ट जैक्सन भाई थर्ड और फोर्थ है. माय प्रायोरिटी लिस्ट इज वेरी वेरी क्लियर. मिडफील्ड, गोलकीपर, अगर स्ट्राइकर गए तो वॉटकिंस, सेस्को, देन अ जैक्सन इफ नीडेड. बट अगर हम दो ऑप्शन से नहीं जा रहे तो आई वुड रादर कीप हॉलैंड एंड ज़र्क्ज़ी इन माय ओपिनियन देन गेट जैक्सन. Ujjal Banik is here. Thank you so much for joining. Hope you have liked the stream. Hope you have subscribed to the channel as well. I don't know कितने सब्सक्राइबर है. अगर आज लाइव में 600 हो जाए तो मजा आ जाए. अगर 600 नहीं हुए हैं, it is all okay. नेक्स्ट स्ट्रीम पे 600 हो जाएंगे लाइव एंड विल सेलिब्रेट इट. जो पैसा सेस्को लेना होगा उसे बली पे लेने. ये मैं बहुत बात बोल चुका हूं उज्जल. थैंक्स फॉर दिस कमेंट. लाइक इफ वी हैड द वॉर चेस्ट फॉर एन 80-90 मिलियन, व्हाई डिड नॉट वी गो फॉर अ मिडफील्डर इन टर्म्स ऑफ एडरसन एज वेल. बलीबा वॉटन छोड़ दो, मिडफील्डर इन जनरल, राइट. हम इस मनी पे दो प्लेयर्स ला सकते हैं, गोलकीपर भी ला सकते हैं. Glad you agree with me on this. I think a lot of fans are actually अभी perspective दिख रहा है धीरे धीरे कि what exactly is needed for the club. Signings को करने करेंगे, but we need to be patient as well. There is a very bad habit among United fan base that they want instant impact. Then they start spamming 60 million waste or 70 million waste clips. Yeah, fair. That's a fair comment. एक मिनट, मुझे एक पिंग आया है. I have to take that. Okay, right. No, that's a fair one. Right. एक मैंने स्टोरी पे ना, मैंने एक स्टोरी डाली थी, एंड थैंक्स प्रियांश फॉर नोटिंग दिस डाउन, राइट. उसमें ना स्ट्रीम यार्ड का लिंक था लाइव, भाई मैंने देखा नहीं था. थैंक्स फॉर इट, बिकॉज ऐसे होते ना भाई, हैक होते हैं चैनल्स. सो glad. If you think of a man who is more money hungry and is not working for money this time, Ashby, I think you're too good for this world. maybe. The only thing I feel why Sesko will not turn into Haaland to, yes, talented तो बहुत ज्यादा है. एंड सेस्को के साथ कुनिया नेम्बोमो का सपोर्ट भी तो मिलेगा विद ब्रूनो एज वेल. सो वी माइट सी बेटर नंबर्स एज वेल, राइट. We might see better numbers as well. And there's a clip in 2023 when we are in for Sesko. He said, I wish to play for United one day. Every player wish to play for United one day, by deep inside. Okay, deep inside. अगर United अच्छी कर रही होती, right, in the past few years, players would choose United. By United is dream of law. Like bachpan se these players have watched United, right? You have to understand that they have a different admiration for United. Like United are अच्छी कर रही होती तो why would not players join United? They always want to do that. It is because Retegi sell करने के बाद they don't want to sell him. Yeah, that's a fair point, Aniket. I think Retegi, but they got a lot of money for Retegi, right? Right. They got a lot of money for Retegi, but I know why Atlanta do not want to sell Ederson as well, because वो core चली जाएगी. Ederson and Retegi were the core of Atlanta and how they performed over these years. That's a fair point. I think Amorim plans to use centre backs as mids, high risk, high reward type of plays. Yes, I was seeing a very good analysis video, kal hi, on how Amorim creates this artificial counter attack situation while building up a play.
तो I'll send that video Discord पे. Definitely do check out, but it's a fantastic video. And then actually tells you how Amorim wants to play. It's like he builds up, basically डिफेंस खींच लेता है अपने आप एंड देन ट्राइज टू रिलीज एंड प्लेयर, जो प्लेयर टर्निंग एबिलिटी है ना, वो मिडफील्ड पिवट में भी चाहिए, वो विंग बैक में भी चाहिए. if these two profile players na, they have the ability to actually turn and run, then you can create that whole counter attack situation क्योंकि space मिल जाती है. I'll send that video. Do definitely check out. It's a fantastic video, भाई. I would fancy Vardy for a season to groom Rasmus. He needs someone who has played in the Premier League. But कितने wage पे आएगा भाई? The wage will be an issue, right? Are we in a situation to pay some wages for free agents right now? Maybe we have to prioritize the signings first. I mean, इस grooming के लिए तो manager भी है, right? अगर सेस्को आ जाएगा तो definitely not. I would take Mateta any day, भाई. Any day. Mateta over Jackson any day, भाई. He has played in the formation as well. Second वाला comment on Sesko. ना ओके, ये वाला लिया. ओके या ले लिया ना भाई, ले लिया मैंने, कमेंट ले लिया भाई, सबका कमेंट लिया आज सबका कमेंट लिया है भाई मैंने. मत बोलना मैंने कमेंट नहीं लिया आज. अगर इन टर्म्स ऑफ स्टैट ओनली बोलूं तो पेपेलू हैज 6.38 बॉल रिकवरीज, 0.9 इंटरसेप्शन, 2.4 टैकल्स. हैविगोरेज ओके, कंपैरिजन पे अगर जा रहे हो तो यू नो 1 इंटरसेप्शन पर 90 इज फॉर प्रीमियर लीग, यू नीड मोर भाई, यू नीड मोर. आई मीन सक्सेस रेट के हिसाब से बोल रहे हो तो यस, बट like we need better interception numbers for the Premier League. But अगर press resisting ability है कि line break करके भाग जाए turn होके, this will work at United. Manchester United preparing a 7. क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो मिस्टेक, really Fermin Lopez 70 million euros, pounds. I don't know what Lakshay will say about this when I'm going to stream with him next week. But this is not going to happen, bhai. I know Barcelona might be, eager to sell players, but no. Fermin Lopez wala bid is far-fetched, bhai. Fermin does not fit right now in this formation. Maybe 10 वगैरह में. But Fermin, if he makes some moves, he would want to start, right? Barcelona is doing really well. I don't think so it's going to happen. Okay, Dario is okay. Ready to spend 70 million on Fermin Lopez from Barcelona. The club is trying to convince him by nearly doubling his salary. Really? भाई अभी तक भाई अगर ऑनस्टीन या रोमानो से नहीं आता ना, आई वोंट बिलीव दिस लिंक इन माय ओपिनियन. निखिल इज हियर, व्हाट्सअप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग भाई, होप यू लाइक द स्ट्रीम. कितने लोग लाइक किए हैं स्ट्रीम, आई हैव नो आइडिया राइट नाउ. अगर आप लोग स्ट्रीम लाइक कर दोगे, 47 लाइक्स भाई, 3 मोर लाइक्स टू गो फॉर 50 लाइक्स. अगर 50 लाइक्स कर दोगे, इट विल डू माय स्ट्रीम रियली गुड, राइट. I'm going to stream for more 10 minutes now, so आप अगर रहोगे तो इट विल बी ग्रेट. हांसी फ्लिक एंड बार्सिलोना आर ओके टू लेट गो फॉर. Okay, bhai, this is crazy, bhai. I've seen reports of us hijacking Hayden Hackney from Ipswich, and now Hackney has rejected them. I see some signs. Bhai, if we get Hackney, I don't know if it's fake news or not, bhai. If we get Hackney, I'll be super happy. Bhai, Carrick mode mein wo player hai, bhai. He's gonna work really well, in my opinion, right? What's the probability of signing Sesko as per you? I see a probability. It all because Sesko has not given a clear priority on where he wants to go. Leipzig has put a deal, like put forward that player is on sale. Valuation hai. Newcastle has met that valuation. So right now Leipzig will accept that bid. But now if Sesko gives an agreement, then United will put a bid. And if United puts that bid, right, Sesko is going to happen. It all depends on the player and agent agreement. So what Vival is cooking behind the scenes, it will be very interesting to see. He said, I wish to play for United one day, but not now because हाँ वो 2 साल पहले बोला था, right? I think 2023 की clip है इसकी, right? I've seen this. Now he's ready. Now he's ready to take that step up. I think he knows it. I still feel the Sesko deal will happen. I still feel it will happen, in my opinion. Obviously वो है press resistance, quick half turns in low radius of curvature दोनों के पास. Wow, okay. But in terms of defensively, Pepelu is better than, and La Liga में need be okay. नहीं पड़ता उतना, but he has the okay, fair. Because of the demands of the La Liga, you don't see those numbers of interception. I think the same. I think I can say about Kubasi as well. Very good numbers again, but progressive numbers काफी अच्छे हैं, but tackle interception के numbers उतने ज़्यादा नहीं है.
but I understand La Liga में उतनी demand भी नहीं है to do that. That's a fair comment. I actually absolutely agree with this comment as well. No, that's a legit comment actually. Now that I think about it, it's a legit comment because La Liga में you do not need those demands of having high interception, high intensity football, right? You need control in the top half and the mid half of the pitch, and that's why the defenders are actually very good ball in ball carrying and in technicality, even the midfielders and the pivots as well. आप Zubimendi को देख लो, right? What ability on the ball, what range of passing, even as a CDM. So that's a fair comment, bhai. Glad for this. That's why you are a mod, bhai. Yeah, ठीक है. All Discord folks, well, अभी war चालू हो जाएगा Discord में. There's a reason भाई this guy is my mod, ठीक है. Ball knowledge देख रहे हो इसकी? Next level. Why Fermin Lopez? He's better going forward. United have exactly, bhai. I don't believe this link. Ideally, I would want bro. Okay, tell me. Okay, if Mount is gone, right, then Fermin makes sense. But Mount to jayega nahi. No one is going for him. I'm a fan of Fermin Lopez, right? But he's not gonna come. Man. It's a urti hui khabar hai. I don't believe it. Lucien Agumo is one name from La Liga. I've heard good DM and some say like Baliba. Yes, there are a lot of player profiles like Baliba in the market. Bhai. We just have to identify them. Baliba is there in the Premier League. काम कर गया Brighton के लिए. That's why his valuation is fantastic. But there are many players like Baliba. अब सीरिया में भी मिलेंगे आपको बलीबा जैसे प्लेयर्स, ला लीगा में मिलेंगे, बुंडेस लीगा में मिलेंगे आपको बलीबा जैसे प्लेयर्स, राइट? आई नो हाइदारा एक प्लेयर था that was very heavily linked to us during the time when Rangnick was there. वो प्लेयर उस मोल्ड का था, but that player absolutely like nose dive किया उसका growth. I feel 90% it's fake, but if they get 70 million for they're selling him, but we are putting 70 million for him, I love him. प्रोफाइल तो नहीं चाहिए, आई थिंक फॉर श्योर प्रोफाइल तो नहीं, बट प्लेयर भाई फर्मिन लोपेज इज अ नेक्स्ट लेवल फैंटास्टिक प्लेयर भाई, फैंटास्टिक प्लेयर. Simply Red is here. Thank you so much for joining. Hope you have liked the stream. Hope you have subscribed to the channel as well. Hope you have joined the Discord server as well. अगर आपने join नहीं किया है, do join the Discord server as well. We need a midfielder of 2. We will get injuries. 1 striker, 1 goalkeeper, 1 right wing back. I know. I have said this भाई. Midfielder चाहिए. Else, it will just put pressure on our wing backs and our strikers and our L10s and R10s. That's what's going to happen, bhai. So, I agree. Bro, did you see Mount and Doggo linking last season? I did, but I still don't think that the link up is still good enough, in my opinion. Like, I think the Dorgu and Bruno link ups are pretty good, in my opinion. Cunha and Dorgu were forming a good partnership. West Ham game में absolutely had Todibo on toast, right? So वो देखने मिल सकता है. माउंट के साथ I don't know. I'm in UK. Okay, Uttarakhand. Yes. Fair. And one more thing, Pepelu played in relegation teams, played in Segunda, helping his team to promote and currently in a good. So you're selling Pepelu to me, right? I have to check that player. Agume for 25 million is very good. Arsenal was getting before Nordgaard signing. Oh, okay. Nordgaard, okay. Arsenal was going for Agume before Nordgaard. Interesting. By the way, by when do you think we are getting the confirmed news where Sesko is heading? I feel max tomorrow. Bid already aa chuki hai, right? Now Sesko will give his decision. If Sesko gives a decision for United, then United kal bid karegi, and bid aa gayi to Ornstein bomba bhi aa jayega. I think this is gonna happen, bhai. Did you see Wednesday का लाइव स्ट्रीम? लाइक वो मैच मैंने लाइव स्ट्रीम किया था भाई. वी डिड अ लाइव वॉच अलोंग. काफी बढ़िया व्यूइंग थी उस दिन. थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हु जॉइंड इन. वी सॉ द मैच टुगेदर. I saw that Mount and Bruno link up as well initially in the minutes as well. Mount was good, but phases में अच्छा था, right? Like from a quality standpoint, he was not offering much. From an energy standpoint, yes, I would say yes. Yappers United is here. Thank you so much. Hope you have liked the stream. What's up, homie? Yes, I'm good. What's up as well to you? How are you? Hope you're doing well. कैसा लग रहा है? How do you feel about the whole Sesko situation? मैं और 5 minute I'm gonna stream. It's already been 2 hours. I'm gonna stream for more 5 minutes. I'll take the last chats in the
comment section and then I'll close the stream. It's already been 2 hours जब मैं बात कर रहा हूँ अभी से. Why don't Leipzig take Mount to replace Mount? नहीं लेंगे भाई Leipzig Mount. नहीं लेगा, नहीं लेगा. मे बी माउंट के पास वो मास शार्प एग्जैक्टली मैच शार्पनेस अभी तक नहीं है. एंड आई थिंक दैट आफ्टर सम ऑफ द इंजरीज नाउ द प्लेयर इज नॉट द सेम एनीमोर. द प्लेयर इज नॉट द सेम एनीमोर देयर. शाश्वत. तो आई डोंट थिंक सो Mount has it in him to play for United, in my opinion. I think Mount and pivot can actually नहीं Apples. I don't think so. Mount I know उसके बॉक्स टू बॉक्स एबिलिटीज वगैरह हैं बट डिफेंसिवली ही इज सस भाई. वी नीड अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन काइंड ऑफ थिंग. बट उसमें भी माउंट फिट्स इन एज अ रनर मोर बट नॉट एज अ डिफेंसिव हैज डिफेंसिव एबिलिटीज. अगर वो पिवट पे खेला ना ही विल डेफिनेटली बी इंजर्ड. He'll definitely be injured. So we have to be careful about it, right? So I know where you're coming from this POV, but Mount and in a pivot does not work, right? So thank you so much for everyone who has joined the stream today. I really appreciate. We had a massive stream भाई. आज काफी लोग आए थे stream पे and we already reached I think कितने likes हो गए अभी तक 50 likes हो गए. Thank you so much for the support. Thank you so much for 50 likes. कितने अपने कितने सब्सक्राइबर्स हो गए 592 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी. 8 more to go for 600. अगर 600 नेक्स्ट स्ट्रीम पे पहुंच जाए तो मजा आ जाए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एवरीवन. Last few comments. Mboma is backup and Mboma to Cunha can work considering 1 game a week. Yes. Fit रहा तो it might work. Quality standpoint, it's we'll only see what's gonna happen. Mount plus Hoyland, Sesko plus 15. Is goal Sesko plus 15-20 million. No, I think I would still keep Hoyland. I think Hoyland's valuation is much more. वो ज्यादा वैल्यूएशन में सेल होगा. बट चेल्सी में भी वो पिवट में भी अपने अच्छे गेम्स देता था. बट या वो सिचुएशन अलग थी भाई. माउंट पिवट में बहुत रेयरली खेला. माउंट यूज्ड टू प्ले इन द लेफ्ट विंग और कैम पोजीशन मोर फॉर चेल्सी, राइट? Thank you to take care. Thank you so much for joining the stream, bhai. Thank you so much. I feel Leipzig should consider Mount seriously to replace Xavi Simons. Fair. Absolutely fair. Thank you so much for joining the stream, everyone. It was really happy to see everyone again. Kal will do a stream. Kal will be rating the Premier League transfers with Almighty Blues and Lala. So do join the tomorrow. And kal watch along bhi karenge on United game. Thank you so much for joining. This is Ash Talks Football signing off. Thank you so much.